I want to briefly introduce our mentor here today, our speaker sir, Dr. Sahadeo Wankhade sir. He is one of the best person. जैसे बोलते हैं ना कि खुद के पाँव पाले में नजर आते हैं. He stood first in his first homeopathic classification qualification in 1998 in Vidarbha state. He stood first. Along with that, he got first Dr. Bonninghausen trophy to treat cutaneous irreversible pre-pathological gangrene case, as well as he has presented trophy for documentation of live presentation of patients. And we are glad to know that he is operating Sadguru Homeopathic Hospital in Akola and is treating IPD students and doctors. IPD means indoor patients. Treating indoor patients in Akola is a very big thing. To 24 hours for patient and has OPD, many OPD patients, treating irreversible cases, mutated cases, autism, mutism, ASD, and has vast experience in treating this type of patients. And also, please clap for him, Dr. Sahadeo Wankhade. With these words, I hand over mic to Dr. Krishna Mansa. I would like to welcome sir. I would like to request Dr. Rama ma'am, please welcome our chief guest, Dr. Sahadeo Wankhade sir. I would like to request our chief Ina ma'am, Dr. Ina ma'am, to welcome our chief guest, Dr. Sahadeo sir. I request Dr. Sahadeo to please welcome our Dr. Uttam Chawda sir from Rajasthan. I request Dr. Anjali to please welcome our President, Dr. Lakshman sir. Dr. Lakshman sir has devoted his life and his time for organizing us. हम लोग कुछ भी नहीं करते सर, सब कुछ करते हैं, serving everything. मतलब आप लोग यहाँ बैठे हो, सर का विजन है और सर का विजन इतना बड़ा है कि सर की सोच है कि एक-एक के पास होम्योपैथी जाना चाहिए और उसके लिए सर के लिए एक ही प्लानिंग है. जब भी हम खाली बैठते तो सर यही शेयर करते हैं, यार आजकल अपने को ऐसे करना है, यार अपने को अच्छा करना है, अपने को ना उस गांव तक पहुंचना है, कि तक पहुंचना है कि होम्योपैथी एक-एक को समझना है. So please again welcome Dr. Now, not taking much time, I request Dr. Sahadeo Wankhade sir to please start his presentation. For this, we have gathered here and we have extreme trust for that. Okay, thank you so much. Thank you so much. Hello. हालांकि डॉक्टर सुभाष जी ने घोषणा कर दी, हालांकि बाकी देखा जाए तो जैसी प्लानिंग हुई थी और नाम सुना कि डॉक्टर वानखेड़े जी आने वाले हैं, हमारी मुलाकात बहुत पहले से हो गई थी महाबलेश्वर में और तब से मैं और राकेश राठौड़ जी जब गए थे तभी पहली बार हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा तो आपने जो बताया था कि किसके पाँव कहाँ पे, वो चीज वहीं पे दिख गई थी और मुझे मालूम था कि एक बार इनको बुलाना ही पड़ेगा. और लक्ष्मण जी और हम लोग कम से कम 25 साल से जुड़े हैं. 25 साल से लक्ष्मण जी लगातार भिलाई में ऐसे प्रोग्राम करते आ रहे हैं. मेरे ख्याल से पूरे छत्तीसगढ़ में किसी ने इस तरह के होम्योपैथिक एक्टिविटीज आज तक नहीं की. एक बार जोरदार तालियां. ऐसा कोई भी एक ऐसा होम्योपैथी का कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य, सेवा कार्य, भले सेमिनार ले लीजिए, कैंप ले लीजिए, और ऐसे कैंप इन्होंने करवा के बता दिया है कि मेरे ख्याल से भविष्य में भी कोई इस तरह की गतिविधियां शायद ना कर पाए जो उन्होंने 25 साल से इन्होंने किया है और आज भी करते आ रहे हैं. मैं तो कहता हूँ कि केस के शेयर खुल गए और फिर से फर्टिलिटी वाले फिर से मिल गए. ये गाना सुना है ना आप लोग ने? अभी नया गाना आया है ऋतिक रोशन का, नई पिक्चर, फाइनल पिक्चर आई. आप लोग अपडेट नहीं करते यार अपने आप को.
मैं अपने आप को इतना जवान अपडेट करते रहा हूं और आज फिर से अपडेट करने के लिए मैं ये नहीं देखता कि कोई जूनियर मुझे अपडेट कर रहा है या कौन कर रहा है। बस हमको अपडेट करना है, अपडेट रहना है। फिर से एक बार ज्यादा टाइम ना लेते हुए, इस बार जो फिर से हमारा प्रेडिक्टिव ग्रुप फिर से एक्टिव हो चुका है, लक्ष्मण जी फिर से एक्टिव हो चुके हैं। इस बार जो भीड़ दिख रही है, मुझे उम्मीद है कि अगली बार बहुत शॉर्ट पीरियड में एक फिर सेमिनार हो जाए और शाम 9 बजे मैं सोचता हूँ कि चालू हो जाए। और वानखेड़े सर ने कहा था कि मेरे को 5 बजे तक नहीं, मुझे 6 बजे तक टाइम मिले। 6 बजे नहीं, आपको याद होगा महाबलेश्वर जैसी जगह में रात में 9 बजे तक है, 9 बजे तक अपना प्रोग्राम चलता रहा। 12-1 बजे तक हम लोग कोई डिस्कशन करते रहे। सुबह चाय, सुबह ब्रश कर रहे हैं, अरे यार वो कल ऐसा होता, कल इन्होंने ये कहा था। ये जुनून जो है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में जो कमी है वो जुनून की। हम लोग ना तो सीखने के उतने हमारे में जुनून है, ना उसको रिवाइज कर रहे हैं, ना हम आगे बढ़ रहे हैं। पता नहीं क्या है छत्तीसगढ़ का, चावल का कमाल है या किसका है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग इतने कोरिया टाइप के हो गए हैं छत्तीसगढ़ में, वो तो कोरिया बोलते ना सर, हाँ, कि हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। जहां है वही के वही है। हैदराबाद आगे बढ़ गया, इनका पूरा ये सब आगे बढ़ गए। हम लोग छत्तीसगढ़ वाले जहां है वही के वही है। आज मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आज ऐसे कोई जादू की कुछ ऐसा जो जादू करके नहीं, मिरेकल आपने जो है टॉपिक रखा है मिरेकल, तो वाकई आज मिरेकल हो जाए और ऐसा आपको जादू चल जाए कि कल से लगातार सब में ऐसी दीवानगी बढ़ जाए कि अब से हम भी कुछ ऐसा करके बताएंगे कि प्रेडिक्टिव का नाम ऊंचा हो, ना केवल प्रेडिक्टिव का होम्योपैथी का नाम ऊंचा हो और इससे डबल भीड़ बढ़ जाए। फिर से एक बार अपना लेते हुए थैंक यू सो मच। आदेश है, मुझे भी कुछ बोलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हृदय से आभार देना चाहूंगा डॉक्टर काशवत का और आरोग्य वाहिनी का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और आप लोग से मिलने का एक सौभाग्य प्रदान किया। जैसे कि चावड़ा साहब बता रहे थे, उसी श्रृंखला में मैं आगे बोलना चाहूंगा कि होम्योपैथी में सबसे टफ काम, मैंने होम्योपैथी में बहुत से काम किए, लगभग एकेडमिक की सारी पोस्ट अचीव की, लेकिन सबसे टफ काम जो मैंने आज तक नहीं कर पाया, ऑर्गेनाइज करना, सेमिनार या कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना। और इसके लिए डॉक्टर लक्ष्मण को मैं सैल्यूट देता हूं, क्योंकि ये श्रृंखला लगा देते हैं। और आप सबको बोलता हूं कि इतना टफ काम और वन मैन आर्मी, जैसे डॉक्टर सुभाष ने बताया कि वाकई ये इनको ना किसी असिस्टेंट की नीड है और किसी की भी नीड नहीं है, ये अकेले वन मैन आर्मी सफिशिएंट है। और सक्सेसफुल कैंप्स और सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं, तो ये काम होम्योपैथी में सबसे टफ है, क्योंकि सबको मालूम है हम लोग इंडिविजुअल है, तो हर इंडिविजुअल अलग ढंग से सोचता है, उनको गैदर करना बड़ी मुश्किल है, तो वो मुश्किल काम डॉक्टर लक्ष्मण जी करते हैं। हाँ, अभी मुझे माइक दिया गया तो मैं एक चीज आप लोग को बोलना चाहूंगा। अभी वर्तमान में थोड़ा सा टाइम लूंगा, आप लोग लेट हो गए तो थोड़ा सा लेट और सही। वर्तमान में होम्योपैथी बहुत ही कठिन समय से गुजर रही है, बहुत ही टफ टाइम, और इतना कठिन समय है कि भय लगता है कि होम्योपैथी खत्म न हो। कारण क्या है? किसी भी पैथी का मेन है उसके होम्योपैथी के होम्योपैथ बनना। अभी हम छत्तीसगढ़ की बात करें, इंडिया की बात ना करते, छत्तीसगढ़ में अभी स्थिति ये है, 3 कॉलेजेस थे, 2 कॉलेज के मैनेजमेंट ने कॉलेज बंद कर दिया। सिंस 3 इयर्स 2 कॉलेजेस में एडमिशन बंद है। बंद गवर्नमेंट ने नहीं किया,
किसी एजेंसी ने नहीं किया, किसी काउंसिल ने नहीं किया, किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं किया, मैनेजमेंट ने बंद कर दिया। कारण होम्योपैथी में एंट्री बहुत मुश्किल हो गई, बहुत टफ हो। गवर्नमेंट के जो नियम है, एक एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, यूएमएस, सारे एंट्री के लिए उन्होंने एक पैटर्न रख दिया, एक रूल रख दिया। तो उससे होम्योपैथी में एंट्री में बहुत फर्क पड़ गया। क्योंकि नो डाउट आप सब जो आए हैं, मैं भी आया हूँ, जितने भी हम लोग आए हैं, इससे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट होम्योपैथी के लिए आए हैं। हम लोगों ने पीएमडी ट्राई की थी, उस समय थी में दूसरे सौभाग्य से बोल रहा हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी साइंस है, इतनी अच्छी ऊपर की कोई भी साइंस नहीं है जिसके लिए एडमिशन लाइन लगती है। तो फर्स्ट पॉइंट अभी एंट्री बहुत डिफिकल्ट हो गई है। आप एंट्री कर जाओगे, कैरी होना बहुत डिफिकल्ट हो गया। स्टूडेंट्स के ऊपर थोप दिया गया बहुत सारे अनवांटेड चीजों को भी। आप ले के मेहनत करके पास होंगे। होम्योपैथी पढ़ना और प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट है। एक जमाने में हम लोग बोलते थे होम्योपैथी में घुसना आसान है, अब घुसना भी डिफिकल्ट है। पढ़ना और प्रैक्टिस करना एलोपैथी या दूसरे साइड से ज्यादा डिफिकल्ट है। आप मेहनत करके पास हो जाओगे, फिर गवर्नमेंट ने एक लगा दिया एग्जिट टेस्ट। आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। बीएचएमएस करना पर्याप्त नहीं है। बीएचएमएस करोगे, डिग्री रिकॉग्नाइज पहले होगी, डिग्री रिकॉग्नाइज हो जाएगी, देन यू हैव टू अपीयर टेस्ट। वो टेस्ट जब आप क्लियर, वो टेस्ट ऑर्गेनाइज करेगा कौन? सेंट्रल बोर्ड। वो ऑर्गेनाइज करेगा। उस टेस्ट में जब आप क्लियर हो जाओगे, देन ओनली यू कैन प्रैक्टिस होम्योपैथी। देन उसके बाद फिर गवर्नमेंट के रूल, जब आप क्लिनिक खोलने आओगे, अभी यहाँ जितने भी डॉक्टर सब फेस कर रहे हैं, एक से कठिन रूल। आपके क्लिनिक में इंजेक्शन है कि नहीं, स्वाब है कि नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया क्लिनिक मींस यू हैव टू पे वेस्ट डिस्पोजल, फायर, ईच एंड एवरीथिंग जो एक पैथोलॉजी लैब के लिए जरूरी है, अपनी होम्योपैथी क्लिनिक के लिए जरूरी है, जो कि नीड नहीं है। लड़ाई कर रहे हैं लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली है, कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट का रूल है, मींस आपको सब पटाना है, नहीं तो आपकी क्लिनिक को लोग सीज करने आएंगे, परेशान करेंगे, कुछ और अपना फायदा चाहेंगे, आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। सो अभी जो होम्योपैथी है, दूसरी चीज, वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, उनके प्रोपेगेंडास, जैसे डायबिटीज के लिए जो हो रहा है, डेली ब्लड शुगर लेवल को लोग अपनी अप और डाउन करते हैं, नहीं डायबिटीज नो 80 के ऊपर नहीं होना चाहिए, 100 चलेगा, कभी बोलेंगे 120 चलेगा। किसी बुक में अचानक किसी दिन बोल देंगे नहीं 80 के ऊपर है, यू आर डायबिटिक, स्टार्ट टेक एंटी डायबिटिक। ये चीजें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रूप से उन कंपनीज को जो दवाई बनाती है उसको मदद करने के लिए भिड़ी हुई एजेंसीज, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। कोविड में हम सबको मालूम है जितना अच्छा हम लोगों ने काम किया, आप लोगों ने काम किया, होम्योपैथी ने काम किया, उतना अच्छा दूसरी साइंस नहीं की, लेकिन रिजल्ट नथिंग। आपको इंजेक्शन लेना है, आपको इम्यूनाइजेशन वाली वैक्सीन लगाना है, उसका साइड इफेक्ट कुछ भी हो, नहीं लगाओगे, आपको थिएटर में नहीं घुसने दिया जाएगा, आपको फ्लाइट में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपको होटल में नहीं घुसने दिया जाएगा, हर जगह आपको डबल वैक्सीनेशन के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। मींस ये अल्टीमेटली फिर होम्योपैथी पे वार है, जबकि मैं खुद नहीं लगाया, और भी कई लोग होंगे जिसने वैक्सीन नहीं लगाया, हम तो नहीं मर गए। कोविड में आप लोग को याद होगा, एक उदाहरण आप बताइए होम डेथ है, एक उदाहरण बताइए जो कोविड से घर में मर गया। नोबडी। हॉस्पिटल डेथ है सर, ऐसी कौन सा वायरस है जो घर में नहीं मारता, हॉस्पिटल में मार रहा है। सो सारी चीजों में अपने को बहुत ज्यादा फाइट करना है, बहुत ज्यादा लड़ना है। फाइट करने के लिए यूनिटी जरूरी है, गवर्नमेंट के रूल्स को चैलेंज करने के लिए यूनिटी जरूरी है। यूनिटी नहीं रहेगी तो वी कांट प्रैक्टिस होम्योपैथी, और अल्टीमेटली होम्योपैथी बंद हो जाएगी। मैंने जब छत्तीसगढ़ की बात की, 3 में से 2 कॉलेज बंद हो गए,
ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट का डाटा बता रहा है 275 कॉलेजेस, लेकिन 180 कॉलेजेस के अलावा अन्य कॉलेज ने उनका फॉर्म भरने से भी मना कर दिया है, मींस नहीं चलाना चाह रहे। जो चल रहे कॉलेज गवर्नमेंट के उससे डाटा दिया जाता है। तो ऐसे 250 से मोर कॉलेज निकाले गवर्नमेंट एक्चुअल पोजीशन में 150 कॉलेजेस चल रहे हैं। तो होम्योपैथी का प्रोडक्शन कम होने वाला है। होम्योपैथी के पीछे लोग पड़े हुए हैं, इस पे अपने को यूनिटी और पैथी को संभाल कर रखना है। आपको यंग जनरेशन है, आप लोग को बहुत फाइट करना है और सारे रूल्स के अगेंस्ट में, क्योंकि पैथी में दम है। अभी आपने हाल में ही देखा होगा वेस्ट बंगाल के एक सांसद ने पार्लियामेंट में बोला होम्योपैथी फेक है। मीन्स क्या है, और हम उसका केवल एक विरोध करके चुप हो जाते हैं। मतलब पार्लियामेंट में लोग चैलेंज कर रहे हो और यू हैव टू गिव मिरेकल्स। आपको गवर्नमेंट का ध्यान, आप लोग सब करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस, लेकिन आप पब्लिसिटी नहीं करते। अपनी अचीवमेंट को पब्लिसिटी करिए, डॉक्यूमेंट बेस्ड होम्योपैथी रखिए, डॉक्यूमेंट बेस्ड होम्योपैथी रखिए। आपके पास पेशेंट आता है उसके पहले का डाटा रखिए, पेशेंट के बाद। साइंटिफिक जब तक आप नहीं करेंगे आपको कोई भी नहीं मिलेगा। फाइट करने के लिए यूनिटी और डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। और लेते हुए सर का लेक्चर हम सुनेंगे। थैंक यू डॉक्टर सतीश ठाकुर सर। आपने जो बताया कड़वा सच है, और हम सब अगर मेहनत नहीं करेंगे तो वाकई डायनासोर जैसे चलेंगे हम लोग। की बात है एक होम्योपैथी जो होम्योपैथी को बहुत चाहते हैं हमारे बीच हैं। मैं आप सबको उनसे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर एस कुरैशी सर, हिज डिस्ट्रिक्ट जज, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, एंड his principal judge and family court Durg. I would like to request Dr. Narsingh Sahu, please piloting him for dais. Please, Dr. Narsingh Sahu. स्टूडेंट के तौर पे है Sir, please. Sir, हमारे लिए मेरे डूज एंड डोंट्स है कल में। Okay, I would like to request Dr. Dilip Devanga to please welcome Dr. Mr. S. Kureshi, sir. Please clap for this moment because we are proud moment for homeopathy. And one of them person who will stand for homeopathy. Thank you, sir, for your welcome. Please. Now I want to hand over this mic to Dr. Sahadeo, sir. And I request all chief guests to be on the boosters, please, sir. Thank you so much, sir. Again on the boosters, please, sir. Thank you so much, sir. Thank you. मोबाइल से नहीं होगा, वो उसके सामने
मैं आपकी जानकारी के लिए एक थोड़ी सूचना दे दूं प्लीज सॉरी है। ये अपना जो कार्यक्रम हो रहा है ये टेलीकास्ट हो रहा है, यूट्यूब में टेलीकास्ट हो रहा है ना। और अपने कुछ साथियों को है तो आप व्हाट्सएप करके उनको खबर दे दीजिए कि वो लोग लिंक करके और थैंक यू। लिंक अब जैसे यूट्यूब इसमें चला गया, सीजी प्रोडक्टिव में चला गया है और सीजी मेडिकल में चला गया है। Good morning, friends. बहुत लेट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। Today, I am going to share my cases, what knowledge I am get from Dr. Vijay sir. I am since 1998 I am with Dr. Vijay sir, connected to predictive homeopathy. सर ने 1998 में predictive homeopathy स्टार्ट किया था और जैसे सर उसमें खुद सीख रहे थे और हमारे कुछ लिमिटेड तब स्टूडेंट थे उनको भी सिखा रहे थे, तो तब से हम सर से जुड़े हुए थे। तो जो हमने सीखा, what I have learned from sir, from the group of predictive homeopathy, वो सब आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो I am going to show you acute and chronic cases. Sir says me only before after cases आपको दिखाना है। तो आप लोग बताइए before after देखना है, only वीडियो देखना है कि आपको थोड़ा सा डिटेल में भी चाहिए कि ये रेमेडी कैसे आई, ये रूब्रिक कौन से लिए, क्या हिस्ट्री थी। तो डिटेल में देखना है तो थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जो मैंने उसमें ऑर्गेनल रेफरेंसेस रखे और एफोरिज्म उसमें एक्सटेंड किए, क्योंकि साइंटिफिकली अगर उसको बेस रहेगा तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगा। तो मैं थोड़ा सा उसका खाली कंक्लूजन बताऊंगा, पूरा एफोरिज्म्स नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो थोड़ा फास्ट जाएंगे। So, first private to Dr. Henning sir, founder of Path. The way, the road, the highway of homeopathy, he gives us a path. आप लोग जानते हैं आजकल बहुत बड़े बड़े हाईवेज इंडिया में बन रहे हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं कि हाईवे से जाना है तो गूगल कर लो, फट से पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी कभी वो गूगल हमारे को घुमा देता है ना। वैसे ही होम्योपैथी का एक वे, एक पार्ट डॉक्टर हैनीमैन ने दिया, लेकिन बहुत से लोग हैं कि वो पार्ट समझ नहीं पाते। तो वो पार्ट पे कैसे चलना, वो डॉक्टर विजय सर ने हमें सिखाया, हाउ टू यूज दैट पार्ट। सो फाउंडर डिड हिज जॉब बाय फाइंडिंग दिस पार्ट। और गुरु डॉक्टर विजय सर taught us how to walk on this path. So today we will discuss the miracle of homeopathy, predictive homeopathy of Dr. Vijay sir. But आप लोग इसमें से कितने लोग हैं जो predictive homeopathy करते पता नहीं, लेकिन predictive क्या है? What is the predictive? What is the meaning of predictive? predictive नाम क्यों दिया विजय सर ने? क्योंकि हम पहले ही पेशेंट को प्रेडिक्ट करते हैं कि आपको मेडिसिन के बाद ये चेंजेस होने वाले हैं, और दैट चेंजेस आर डेफिनेटली पेशेंट विल फॉलो।
और वो चेंजेस पेशेंट में हमेशा दिखेंगे ही। इतना कॉन्फिडेंटली हम पेशेंट को बताते हैं कि ये चेंजेस आप में आएंगे, आपको इसके लिए ये प्रिकॉशंस लेना है, ये करना है, ये नहीं करना है, राइट। सो रिडक्टिव मीन्स इट इज फोरटेल, नॉट द फोरकास्ट। और फोरटेल आपको पता होता है, ये उसमें कॉन्फिडेंस होता है, फोरटेल में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, राइट। फोरकास्ट में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सो इट इज नॉट एक्चुअली न्यू कंसेप्ट, बट इट इज रिजुनेशन ऑफ द बेसिक टेनेट्स ऑफ द होम्योपैथी। जो हैनिमन ने दिया वही डॉक्टर विजयकर सर ने इन द सिंपल लैंग्वेज पढ़ाया। सो जो बेस है होम्योपैथी का, दैट इज द मायाजम, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। The very simple thing, that is disease, the concept of disease. We know the definition of disease. It is the only disturbance in the sensation and function of the body. This is disease. But view about disease in homeopathy and in the modern science, we consider only the disturbance in the functions of the body. So that is first physiological defense and then the structural defense or pathological defense. So Sora goes into the psychosis, that is structural defense. Syphilis, that is structural defense. So Sora goes into psychosis to syphilis. Sora to psychosis to syphilis. This is the homeopathic base, the concept syphilis. Sora to psychosis to syphilis. This is the homeopathic base, the concept of disease. But in modern science, they consider disease is enemy. Why? कुछ भी होता है तो उसे कट कर दो, निकाल डालो, फेंक दो। और we consider the man as a whole. उसे कट कर दो, निकाल डालो, फेंक दो। और we consider the man as a whole. We treat the man as a whole. So उसके लिए only on the miasm homeopathy is based. Without it, nothing should be in the homeopathy. So अगर आपको सक्सेसफुल प्रैक्टिस करना है तो इन चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। और यही कुछ बातें, कुछ चीजें जो लाइफ लॉन्ग आपको काम में आएंगी। लाइफ लॉन्ग आपको अगर इस कंसेप्ट को समझते हैं तो लाइफ लॉन्ग आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, कौन सी भी केस आप सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट केस टेकिंग, देन नॉलेज ऑफ मटर एंड मेडिका, ऑर्गेनो रेपर्टरी, देन द माइजम। ये जब हम डिटेल में देखते हैं, देन वी रीच टू द सिमिलिमम एंड आफ्टर ऑल रिवर्सल ऑफ सिम्टम, दैट इज द फॉलो अप। अगर हमारे फॉलो अप सही है, हम हमारा ऑब्जर्वेशन सही है फॉलो अप में, तो हम किसी भी केस में मिरेकल्स दे सकते हैं, मिरेकल्स पा सकते हैं। ओके, सो फॉलो अप इज द मिरर ऑफ आवर प्रैक्टिस। नाउ व्हाट इज रिवर्सल ऑफ द सिम्टम? मैंने कहा है क्योर करना है, मतलब क्या? रिवर्सल ऑफ द डिजीज करना है। और रिवर्सल कैसा होना चाहिए? जैसे डिजीज स्टार्ट हुआ उसे उस टाइप में हमें रिवर्स करना है, उसे कंप्लीट हेल्थ, नॉर्मल हेल्थ में लाके रखना है। सो रिवर्सल, दैट मींस रिवर्सल ऑफ सिम्टम इज नथिंग बट द रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। सो रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, जैसे कोई बिल्डिंग होती है, वो जैसे कंस्ट्रक्ट होती है, लेकिन जब गिराते हैं तो ऊपर से गिर जाते हैं, लेकिन वापस अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसे उसी स्टाइल में कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। यू कैन सी हियर द होल मैन, होल बॉडी व्हेन डिजीज स्टार्ट, destruction occurs in that body, and when we do the medicine, we reverse the all system, all function of the body, and we get the
So, according to aphorism number 1, the physician hand only mission is to restore the sick to health, to cure as it termed. The highest and ideal cure is rapid, gentle, and permanent restoration of the health, of removal and annihilation of the disease in its full extent in the shortest, most reliable, and most harmless way on easily comprehensible principle. तो ये कितने लोग फॉलो करते हैं? हर पेशेंट को अकॉर्डिंग टू एफोरिज्म नंबर 2 ही क्योर होना चाहिए. क्यों हैनेमन ने इतने अच्छे अच्छे लॉज हमारे सामने रख दिए, हेरिंग लॉ, और इतना अच्छा हेरिंग लॉ हमें मिला है कि जिससे हम इजीली पेशेंट में देख सकते हैं कि क्योर हो रहा है, सप्रेशन हो रहा है, पैलिएशन हो रहा है, राइट. तो इतना अच्छा लॉ हमारे पास है, फिर भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं प्रैक्टिस में, राइट. सो above downward, inside outwards, more important organ to less important organ, center to periphery, in the reverse order of the appearance of the symptom. And the most important thing Dr. Vijayakar sir added here, the sixth law, that is from more dangerous miasm to the less dangerous miasm, that is syphilitic to psychotic to soda. तो ये इस टाइप में हमें रिस्क करना है, रिवर्स ऑफ द डिजीज करना है, और वही हम ईच एंड एवरी केस में मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से हमें लॉज फॉलो करते हैं और फॉलो करना है. ओके, सो द केस ऑफ लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस. व्हाट इज द केस ऑफ लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस? व्हाट इज द लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस? क्या होता है? बताइए. This is lichen simplex chronicus. कोई स्टूडेंट इधर आके बैठिए. आप आए एक यहाँ okay. So lichen simplex chronicus. This patient is a retired professor. He is 66 years old. First, I will show you the video. The site of ulcer is on the foot,
right foot. Sorry, it is left foot. The big toe, second toe, and the last toe. Having ulcerative wound. He has been advised for amputation because he is having hypertension, diabetes, cardiac problems. And it close. Close. So, lichen simplex chronicus, it is an inflammatory disorder of the skin and mucous membrane of unknown origin. What is unknown origin? Unknown origin को हम क्या consider करते हैं? In homeopathy, जिसकी origin ही नहीं है. Autoimmune disorder, yes, very nice. So, unknown origin characterized by basal cell degeneration, heavy T lymphocyte infiltration in the upper dermis, Oliaceous scaling, angular papules, and the ulcerative wounds, which is considered to be a cell-mediated autoimmune disorder. So, it is an autoimmune disorder. Simple ulcer है. कोई बोलेगा कि ये तो यूं ठीक हो जाएगा, है ना? लेकिन it is an autoimmune disorder. So, autoimmune disorder treat करना है. Okay, next. और नीचे था lesions will be because of the injury. तो इंजुरी की वजह से कुछ अल्सर फॉर्म होता है, then it converts into the lichen simplex chronicus. So he is थोड़ी हिस्ट्री में पास पढ़ता हूँ. He is well qualified chemistry professor having hypertension, diabetes mellitus since 1984. His BP was remaining very high to 20/120. And blood sugar is pushed me to 65. He was regularly taking medicine for this. This LSC was started before 2 years due to incense stick burn injury. Incense stick burn injury. अगरबत्ती का सिंपल वहाँ एक झटका लगा और उसके बाद वो फैलते गया. So on the ventral surface of the base right leg, in his family, father patient of diabetes and hypertension. His mother is no more. In his past history, sinusitis in childhood and asthma, acidity, amoebiasis, spondylitis, and hypertension in young age, followed by pleurisy, diabetes, and lichen simplex chronicus. Next. Journey of disease. Fast. Sinusitis, asthma, acidity, fast. Sinusitis, asthma, acidity, amoebiasis, diabetes, spondylitis, hypertension, pleurisy, diabetes, and lichen simplex. This is the journey of disease और इससे ही हमें reverse करना है. Okay. So restoration of health. तो हमारी गाड़ी शुरू हो गई लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस से. देन इतने स्टेशन उस पे आने वाले हैं डायबिटीज. अब इसमें क्या होगा जब हम मेडिसिन देंगे? मेडिसिन देने के बाद सपोज लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस कम हो गया, क्योर हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? हाँ वो तो दिखा है ना, जर्नी ऑफ डिजीज दिखा है. तो क्या होगा? जैसे कि लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस के बाद डायबिटीज है ना. लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस इट इज द 7th लेयर डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज. तो अगर ये सिम्पिलिटिक है, सिम्पिलिटिक से साइकोटिक में आएंगे डायबिटीज.
है ना, माइजम चेंज होगा, दिस इज वन ऑफ द रिवर्सल, ओके, रिवर्सल ऑफ माइजम। तो डायबिटीज में क्या होगा, जब हम शुगर बढ़ेगी, राइट, पहली शुगर कितनी थी, यस, देन फ्लोरेसी, है ना, देन हाइपरटेंशन। अब ये सब होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए। अगर हम रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ कर रहे हैं तो रिवर्सल ऑफ डिजीज होना ही चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। और ये हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये ऐसा ही होगा। और प्रेडिक्शन का एक फायदा होता है, बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है कि पेशेंट उसमें कुछ डिस्टर्ब नहीं करता है, कुछ मेडिसिन नहीं लेता है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है। और अंडर ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए हमारे ट्रीटमेंट को पेशेंट ने कहीं डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कुछ लेना नहीं चाहिए, कुछ लगाना नहीं चाहिए। तो इसके लिए प्रेडिक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेडिक्शन करते हैं तो पेशेंट को एक आइडिया मिल जाती है, एक विजन मिल जाती है कि यस, डॉक्टर ने कहा था ऐसा होगा तो डेफिनेटली वैसा ही होगा। ओके, सो हाइपरटेंशन के बाद स्पॉन्डिलोसिस, देन अमीबाइसिस, देन एसिडिटी, देन अस्थमा, देन साइनसाइटिस। दिस इज द कंप्लीट रिस्टोरेशन। So this is 7 layer chart, suppression chart of Dr. Praful Vijayakar sir. This is 7th layer disease, autoimmune disorder. Next. Now the nature of patient. In 1983, his younger brother was suddenly died, who was with the patient since childhood and to whom he was loving very much. अब हम हिस्ट्री क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें कॉन्फ्लिक्ट भी निकालना है कि ये इसे क्यों हुआ। इंजुरी इट इज नॉट एन एक्सीडेंट, कि ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ मेंटल रीजन होता है, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट। सो दिस न्यूज वाज वेरी शॉकिंग एंड सैडफुल। ही हैज वन सन एंड डॉटर। हिज सन फेल्ड इन बिजनेस एंड फेस्ड लॉस ऑफ 3 lakhs, but he told him that don't worry, God is great. जो भी लॉस हुआ उसने उसके ब्रदर को बोल दिया कि डोंट वरी, जो हुआ होने दो, नो प्रॉब्लम। गया, अपना नहीं था, चले गया। He is very religious, attend each and every satsang, worshipping God daily 2 to 3 hours. Worshipping God 2 to 3 hours. सुबह 3 घंटे वो पूजा करता था। He is chemistry professor, well educated. He has very much faith on God and was not bothered about anything in his life. When he was at Belgium, he told his brother to fix and arrange the marriage of his daughter. He was in Belgium. तो भाई को बोल दिया इंडिया में कि आप लड़का देखो और उसकी शादी कर दो, मुझे टाइम नहीं, मैं नहीं आ सकता, मैं पैसे भेज दूंगा, आप शादी निपटा लेना। इस पर से उसकी डिस्पोजिशन समझ में आ रही है, right? So he was very careless about his work. He gets disturbed and worse after seeing dirtiness, for example, clothes, office table, files, shoes, etc. That means aversion to uncleanliness. Chief complaints was red and black colored open wound on the dorsal and ventral surface of the right foot, severe hypertension, diabetes, constipation. Physical generals, he was hot, thirsty, sweets desire, aversion bitter, constipated, urine stool normal, sleep slight disturb, perspiration profuse. So according to Dr. Vijayakar sir, देखा ही हमने, it is a 7th layer disease. Next, miasm, syphilis. Next. Now tell me the rubrics. क्या लेना? शॉक, हाँ, किस टाइप का शॉक? ब्रदर डेथ, राइट? ओके, और हाँ, उसके काफी दिन बाद हुआ, तो डेथ के काफी दिन बाद हुआ। वहां शॉक था, लेकिन अगर
काफी टाइम निकल जाता है तो हम एलिमेंट फ्रॉम नहीं लेते शॉक, लेकिन देखते हैं एलिमेंट फ्रॉम बर्न, एलिमेंट फ्रॉम शॉक, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ ब्रदर चाइल्ड, religious ulcers, aversion to uncleanliness, contented and carelessness. Next. Now, Dr. Hahnemann क्या कहते हैं कि aphorism 211. Next, हम conclusion देखेंगे only. Sorry, okay. This holds true to such an extent that the state of disposition of the patient often chiefly determines disposition, और वो disposition हमें consider करनी है according to the miasm. So the selection of the homeopathic remedy as being a decidedly characteristic symptoms which can list of all the remain concealed from the accurately observing physician. और ये जो dispositions होते हैं हर patient में निकालना बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि वो concealed होते हैं, ऐसा मानना है Dr. Hahnemann. So I considered here the very religiousness, क्योंकि religiousness it is a psychotic rubric, psychosis, but 2 to 3 hours पूजा करना, then each and every satsang कोई भी छोटा मोटा हो वो अटेंड करने जाते ही थे. So it is called fanaticism, right? Then अब ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इतना एजुकेटेड प्रोफेसर है और इतना टाइम वर्शिप को देना, दिस इज नॉट नॉर्मल. सो फैनेटिसिज्म, इट इज सिफिलिटिक. देन केयरलेसनेस, जो बेल्जियम से कह रहे हैं कि आप ही एक ही लड़की है और उसकी शादी आप ही करवा दो, शादी के लिए भी आने को तैयार नहीं, पैसे चाहे जितने लगते हैं उतने ले लो, मैं डाल देता हूँ, आप शादी निपटा लो. सो दिस इज केयरलेसनेस. देन अगेन केयरलेसनेस ओनली एक पॉइंट पर हम नहीं लेंगे तो इतना हाइपर हाई राइज ब्लड प्रेशर, शुगर राइज और खुद के लिए कोई केयर नहीं. So it is also again the heedlessness, carelessness. So uncleanliness aggravates and hot patient, thirsty. Repatriation, pulsatilla and sulfur, which is the remedy. Sulfur. Sulfur actually dirty होता है, सब लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में. और यहाँ पे अनक्लीनलीनेस एग्रीवेट, सल्फर को होता है डस्ट एग्रीवेशन. Yes, this rubric covers sulfur, but when it goes into syphilis. Yes. So next, sulfur 200 was given. Follow. Second. See the change after one dose of sulfur. Slight aggravation is there. Stop and next. Next video. Now the wound become slight reddish, pinkish. It is good sign. That is blood circulation. Start there. So it is good. You can see back side also. There is spot, pinkish spot. Next. Now you can see the healing from above
सो ऊपर से नीचे हीलिंग हो रहा है, सो ऊपर से नीचे हीलिंग हो रहा है। एंड see the tika, typical sulfur. Now you can see the wound healed. Back side पे healed हो गई। Last follow. See the complete heal. Only scabs remain there. Okay, so follows. See the follow. When I prescribe sulfur, after that he suffer from cold coryza and pain in legs. This is the primary action of sulfur. After that, BP 120, 220 by 120, feeling dullness, blood sugar increase 310. It is blood sugar increase 310. It is after 2 months. So here he feels dullness. That's why I repeat the sulfur again. 201 dose after near about 5th month. Then again after 1 month, blood BP 188 by 110, blood sugar 267 and post meal 330. Again I put him on SL. Then again after 1 month, BP was 210 by 120, blood sugar 220, 285, pain in both legs. That means अभी वो 7th layer से 5th layer पे आया, 5th layer से 4th layer पे आया, and the starting of 3rd layer symptom, that is pain in leg. Then after 1 month, BP 240, देखो ब्लड शुगर कम होती जा रही है और ब्लड बीपी बढ़ते जा रहा है। 240 by 120, blood sugar 110 by 180, and gastritis, feeling weakness. Again he feels weakness. Then again I repeat sulfur 1 dose, and the last follow BP 180, 100, blood sugar 100, post meal 160, and having asthmatic attack. So this was last follow. उसके बाद again he goes into the adventure. So 7th layer से उसे 1st layer पे लाया asthma, right? Then next. This is diagrammatic picture of sulfur. Sulfur covers psoriatic symptoms, sulfur covers psychotic and syphilitic also. Then. Finish. Yes. So इस केस से क्या समझ में आया? समझ में आया? जहां से स्टार्ट हुआ वहीं
कौन से लाए? एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, उनको जो बीपी था वो मल्टीवाइटमिन या शुगर का वो एलोपैथी दवाई उसके बाद उसकी चल रही थी बंद। सेकंड फॉलोअप तक शुरू की, उसके बाद उसे टैपर किया। फर्स्ट मेडिसिन दिया, एज इट इज मेडिसिन वैसी थी, जैसे जैसे ये यहाँ पे इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुई, पेशेंट 7th लेयर से नीचे आने लग गया, देन उसे टैपर करते गया। बीपी की टैबलेट, इसकी पावर टैपर किया, देन शुगर आल्सो, शुगर की टैबलेट आल्सो। नाउ Now, what is the approach? Now, what is the approach in slow progressing psychotic cases? Slow progressing psychotic cases mostly कौन से होते हैं? Tumors, cyst, right? So, इसमें क्या approach हमें apply करना होता है? Purely psychotic cases. Psychotic cases, it is very difficult to do. So Dr. Praful Vijayakar gives us a very important approach for these cases. So he gives us 8 steps. First, identify the miasm, then journey of disease, find the cause, find the rubrics of presenting miasm. अब अगर हम साइकोटिक केसेस में साइकोटिक ही रूब्रिक लेते हैं तो केस क्योर होगी क्या? नहीं, डेफिनेटली वहां सप्रेशन होगा। तो ऐसे केसेस में हमें देखना है प्रेजेंटिंग माइजम, दैट मींस कहीं तभी माइंड लेवल पे या फिर फिजिकल लेवल पे वहां पे सिफिलिटिक स्टार्ट हो रहा है और वो सिफिलिटिक ढूंढना बहुत मुश्किल होता है इन पर्टिकुलरली साइकोटिक केस, क्योंकि साइकोटिक केसेस में पेशेंट का माइंड फुल साइकोटिक माइजम में होता है और वो हमेशा आपको मिसगाइड करते रहता है, राइट? तो ऐसे केसेस में क्योंकि प्रेजेंटिंग सिफिलिस, देन जनरल सिम्टम, पर्टिकुलर सिम्टम, repertorize and select the remedy according to their disposition. Next. So as per footnote 120, almost all psychotic slow progressing cases will show taint of syphilis. Dr. Hahnemann ने कहा taint of syphilitic symptoms at the mental or physical or general level, which should not be neglected and has to be searched properly and considered while arriving at GCS. Syphilitic aspect in the case is neglected when then we will be prescribing only on psychosis, which can either suppress the patient or result in complete cure. What is the meaning of diagnosis? आप लोग डायग्नोसिस के ऊपर प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर प्रिस्क्राइब करने के बाद डायग्नोसिस करते हैं? डायग्नोसिस का मीनिंग होम्योपैथी में है कि नहीं? इट इज यूजफुल और नॉट? The identification of the nature of an illness or other problem by examination of the symptoms or the process of determining the nature of a disease or disorder and distinguishing it from other possible conditions. This is diagnosis, definition of diagnosis. Now, it is useful in homeopathy or not? Yes or no? Yes, क्योंकि उससे हम माइजम पता कर सकते हैं, ओके? माइजम, देन पैथोलॉजी, देन जर्नी एंड क्योर, देन प्रोग्नोसिस। अगर डायग्नोसिस 7th लेयर का 6th लेयर का है तो जर्नी हमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो जर्नी निकालना इजी हो जाता है।
but it is not important in all cases, right? कुछ केसेस, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं कि जहां हम विदाउट डायग्नोसिस भी पेशेंट ट्रीट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर माइजम, क्योंकि हमें माइजम ट्रीट करना होता है, डायग्नोसिस नहीं, डिजीज नहीं, बिकॉज वी ट्रीट द मैन इन डिजीज नॉट द डिजीज मैन। फिर डायग्नोसिस का क्या इंपॉर्टेंस, राइट? सो नो रूल इज हार्ड एंड फास्ट इन होम्योपैथी, जरूरी है भी और नहीं भी। नेक्स्ट, see the case of tumor of neck। आप लोगों को थोड़ा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये ट्यूमर है कि और कुछ है, राइट? सो it is 11 years male child, yes, benign tumor of neck, you can see swelling on neck। अब नेक का कोई भी स्वेलिंग है तो इसे डायग्नोस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि क्योंकि वहां पे बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो कौन से पार्ट में स्वेलिंग है, और वो स्वेलिंग अगर हार्ड होता है तो ग्रोथ है, सिस्ट है कि क्या, राइट? सो इट इज स्वेलिंग ऑन नेक, या आपको एब्सेस टाइप दिख रहा होगा बट इट इज वेरी हार्ड। आपको हिस्ट्री, तो थोड़ा सा स्वेलिंग, नेक स्वेलिंग में क्या क्या आता है देखते हैं। पर diagnosis, swelling of neck can be divided into acute and chronic। acute swelling mostly collection of fluid और abscess के होते हैं, but chronic swellings में बहुत सारे types है। So acute swellings are because of cellulitis, boil, carbuncle and lymphadenitis। chronic swellings are cystic, pulsatile and solid। cystic swellings are bronchial cyst, hydroglossal cyst, dermoid cyst, cystic hygroma, sebaceous cyst, cystic adenoma of thyroid gland and cold abscess। pulsatile swelling particularly of arteries, so aneurysm of carotid or subclavian artery, carotid body tumor, lymph node swelling, primary toxic goiter। and solid swelling are arising from thyroid, bronchogenic carcinoma or sternomastoid tumor। तो तीन चीजें यहाँ पे सॉलिड में होती है, और मोस्टली स्टर्नोमास्टोइड मतलब स्टर्नोमास्टोइड स्वेलिंग मतलब स्वेलिंग और ग्रोथ और ट्यूमर ऑफ स्टर्नोमास्टोइड मसल। जो आपको यहाँ पे दिखा होगा कि वो ऐसा तिरछा था, राइट ना, तो दैट वाज स्वेलिंग ऑफ स्टर्नोमास्टोइड मसल। तो ये क्यों होता है? स्टर्नोमास्टोइड में अगर स्वेलिंग आया तो मोस्टली पैथोलॉजी विल बी बिकॉज ऑफ infection, okay, but most of the tumors caused due to injury, okay। As per aphorism number 6, takes note of nothing in every individual disease except the changes in the health of the body and the mind। The conclusion for the physician, the disease consists only of the totality of its symptom। डिजीज को जो भी ट्रीट करते हैं उनके लिए हैनीमैन ने लिख के रखा है कि आपको सिम्टम्स देखना है। Then next, aphorism 7, in a word, the totality of the symptoms must be the principle needed, the only thing the physician has to take note of in every case of disease and to remove by means of his art in order that it shall be cured and transformed into। अगर हम completely symptoms cure करते हैं
तो disease automatically cure होगा. Whilst paying attention to those circumstances, the physician needs only to remove the totality of the symptoms in order to cure the disease. जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि कोई भी ग्रोथ है तो उसे मॉडर्न साइंस कट कर देती है, लेकिन सिम्टोमेटोलॉजिकली ऑल सिम्टम्स लेके उसे ट्रीट करना और उसे डिसॉल्व करना और वो भी रिवर्सल डायरेक्शन में, राइट. एफोरिज्म 8 कंक्लूजन में, एफोरिज्म 8 में हनुमान ने क्या लिखा है? इफ ऑल द सिम्टम्स बी इरेडिकेटेड द डिजीज इज ऑलवेज क्योर्ड इंटरनली इन इट्स होल एक्सटेंट. बहुत ही अच्छा डॉक्टर हनुमान ने कहा है कि cured internally, not only disease, the whole man cured completely, yes, in the whole extent. Aphorism 17, the physician has only to remove the whole of the symptoms in order at the same time to abrogate and annihilate the internal change, that is to say, the morbid rearrangement of the vital force, consequently the totality of the disease itself. When the disease is annihilated, the health is restored, and this is the highest, the sole aim of the physician. हनुमान ने भटकने ही नहीं दिया उनका. मैंने लिख के रखा है, इसे फॉलो करो आप कंप्लीटली, तो आप यू विल बी द बेस्ट फिजिशियन, राइट. The practitioner therefore only needs to take away the totality of the signs and the symptoms of the disease individual, and he has removed the entire disease. This is the highest, the sole aim of the physician. Okay? Now the history. This child, he has habit of bedwetting. Because of that, he was suffering with recurrent UTI, and every time infection was suppressed by antibiotics. Also, history of injury on right side of neck due to falling on the corner of the wall. खेलते खेलते किसी बच्चे ने धकेल दिया, गिर गया और वॉल का कॉर्नर यहाँ लगे. उसके कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली वहाँ स्वेलिंग आना स्टार्ट हुआ, और जब ये आया एक्चुअली उनका प्लान सर्जरी हुआ, मतलब किसी हॉस्पिटल से वो आए थे, किसी सर्जन के पास से आए थे, उनका सर्जरी प्लान किया गया था, और किसी ने बताया, एक्चुअली वो वहां से भाग के आए कि किसी ने बताया उनको कि एक बार उनपे ट्राई करो, नेक पे है, कुछ भी हो सकता है. तो हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे बोल के आए और क्लिनिक में आए, दिखाया. तो उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारा सर्जरी होने वाला है, एनेस्थेटिक अपॉइंट किया हुआ है, और आप बताइए अगर आप 100% श्योर है कि ये डिसॉल्व हो जाएगा तो हम ट्रीटमेंट करते हैं. तो देखने के बाद एक्चुअली मैंने भी फर्स्ट टाइम ऐसे केस देखा था कि नेक पे स्वेलिंग है. हम जनरली ग्वाइटर के स्वेलिंग देखते हैं, है ना, और ग्वाइटर में हम यूज्ड टू हो जाते हैं कि यस हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म, लेकिन साइड में है और ये स्वेलिंग काय का है. ओके, सो उनको बताया कि ओके वेट करो, हो जाएगा. हिस्ट्री. His nature was, his father is tailor and he likes working with father at the shop, and he is not interested in study. He was interested in working with father but not interested in study. ये थोड़ा contradictory point है, आपको आगे समझ में आएगा. Very haughty and jealous because he refuses to share things with friends, even with his younger sister, but when parents ask to give, he is agreed to share. Having fear of dark, public, physician, injection and operation. This is one of the reason. Operation से डर लग रहा था, इसलिए भी वो सोच रहे थे करना है कि नहीं करना. Chip complaint was big hard over to elongated swelling on right side of neck since 2 months, mild painful chronic headache.
Physical generals was hot patient, thirstless, desire pizza and hot food, aversion sweet, perspiration profuse on nose while eating. According to Vijay sir, this is pure psychotic disease. Layer was third layer, mesenchyme, connective tissue, rubric. Yes. So he was very haughty boy, timid, public appearing way, jealousy, aversion to study, hard on inferiors, soft with superiors, क्योंकि फादर ने बोला तो ही देगा नहीं तो नहीं देगा. Hot patient, thirstless, and desire hot food. Remedies, very simple ना. और जब पेशेंट आया तो इतना कॉम्प्लिकेशन कर दिया था, मैं भी थोड़ा सा ऊपर करवा लेके आया था, हो गया कि निपट से बंद. सर प्रेजेंट होगा. बहुत ही अच्छा. Thank you very much. है ना इधर से एक. ओके. ये पॉइंटर. So, लाइको, क्या लाइको डिसॉल्व करेगा इसे? अरे बोलो यार, अपन ने साइंटिफिकली देखा है, एनएम ने क्या कहा है, क्योंकि हम सिम्टम ले रहे हैं, है ना, टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे से मेडिसिन निकाल रहे हैं, डेफिनेटली उसे करना ही चाहिए, है ना. यस, अगर किया तो सर्जन देखते फॉलो. अब रिवर्सल में क्या आना चाहिए? कफ एंड कोल्ड ऑफ यूटीआई. यस. कितना था? यस. अभी वो अबो डाउनवर्ड हुआ है, राइट. देखो नीचे आ गया, अबो डाउनवर्ड, यहाँ का इतना पार्ट चले गया. ओके, डिसॉल्व हो गया. यस. नेक्स्ट. अभी देखो आपको ये मसल दिख रही होगी. नहीं. Yes, now you can see the sternomastoid muscle. इसके पहले नहीं दिख रही. Yes, it is clear. It is the tumor of sternomastoid muscle. Yes, and see the tumor now dissolved near about 90%. Near about 90%. Last, and see the last follow.
देखिए सर बढ़ा गया वीडियो का Now see the urethritis, urinary tract infection. This is complete reversal. Third layer to first layer. Okay? So lipo elements from height, angular, rotation, multiplication, timidity, headstrong, haughty, hard on inferior, soft to superior. Right? ये सभी को पता है. Next. Now Dr. Hahnemann in aphorism 53. The true mild cures take place only according to the homeopathic method, which, as we have found, aphorism 7 to 25, by experience and deduction is unquestionably the proper one, by which through are the quickest, most certain and most permanent cure are obtained, since this healing are based upon an eternal infallible law of nature. That is the heading. Right? Above downward हमने देखा, in the reversal order हमने देखा, ट्यूमर गया, उसके बाद यूरेथ्राइटिस रिटर्न आया. The pure homeopathic healing art is the only correct method, the one possible to human art, the steadfast way to cure, as certain as there is but one straight line between two given points. The homeopathy is based on an infallible law of nature and proves itself as the only excellent one. That's why homeopathy becomes excellent. क्योंकि हमारे पास हर चीज के लिए साइंटिफिक लॉ है. क्यों हुआ, कैसे हुआ, हर चीज हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं. So case of parenchymal hemorrhage with subarachnoid hemorrhage, quadriplegia and coma. It's a accidental case, very emergency case. और पेशेंट भी देखो 6 year student है, 6 year boy है. This patient was in ICU of big multi-specialty hospital at Akola since 22 days. Since 22 days, he was admitted on 16th November 2012 and was under allopathic treatment. I was called by my junior assistant doctor to see the condition of this patient on 17th December 2012. I observed that patient was lying on the bed with semi-unconscious with stiff extremities, curved posture like tetanus patient, paralysis of both extremities. All muscles are atrophied and contracted, only skeleton was visible. You can imagine. Right? The only step जो body पे पूरा musculature चले गया था, only bones. So जो body पे पूरा musculature चले गया था, only bones. So hard, tender and stiff muscle and all vessels of extremities were prominently seen. Profuse perspiration on face and body, making faces.
when I observe that, when I see that patient, he makes faces different. Maybe due to irritation in the brain, patient was exhibiting different expression, otherwise no movement, no sensation in extremities, weakness in joint, having cough which was removed by regular suction, involuntary stool, and patient was catheterized, patient was unconscious but eyes were open without response to call, respiration was very fast, stertorous, gasping, which was severely aggravated at evening and night. Dribbling saliva, sparring of eyes, biting of lips and tongue, chewing of teeth, continuous movement of jaw like chewing, regular convulsions, right hip joint fracture, injury of chest, feeding by rice tube and tracheotomy was done. He bear cold atmosphere, wearing always required. I came to know that there was no improvement since admitted to hospital. It was suggested by doctor it is better to purchase ventilator and mini suction machine to treat the patient at home by taking discharge. After 22 days, डॉक्टर ने एडवाइस दे दिया कि अब इसको घर पे लेके जाओ, नो हो, आप घर पे जितने दिन रहेगा उतने दिन घर पे उसे मेंटेन कर सकते हैं. So the patient was living in combined family, the given by his mother. Patient was living in combined family and uncle and auntie was assigned as father and mother. जैसे बड़े फैमिली में जनरली देखे गया बच्चे बड़े मम्मी पापा को ही अपने रियल मम्मी पापा समझ लेते हैं उनको, क्योंकि सब बच्चे उनको मम्मी पापा बोलते हैं इसलिए ये भी हम उनको, और रियल मदर फादर को अंकल आंटी. सो यही कंडीशन इस बच्चे की थी. He was assigned as father and mother. He was saying uncle to his father and auntie to his mother. He was having habit of frequent topple down since childhood. बार-बार गिरने की आदत. During childhood, he fall down from cot. His right cheek was injured once. His left knee joint was injured while playing. During last rainy season, his left eyebrow was injured. His right eyebrow was injured when he fall down on the hard floor. He also suffered from left side head injury when he fall down as his friend forcefully pushed down from third floor. तीसरे मंजिल से उसे वो तीसरे मंजिल से गिर गया था जिससे उसे हेड इंजरी हुई थी. गिरते बराबर he goes into the coma. Recently on 6 November after school hours while he was playing kite at the 5:30 p.m. on the terrace without informing to parents, his elder brother also tried to stop him, but he continued playing. Unknowingly, he fell down from the terrace of third floor of his house. Immediately, he becomes unconscious. Hence, never took him to the local hospital. However, medical officer at the hospital refused to admit him and was referred to Akola. Washington to Akola near about 100 kilometers away. So, patient was brought to Akola, which was 2 hours and 30 minutes journey. During this period, patient was in coma. He was admitted in ICU and on the next day operated for tracheotomy. Intermittently, he was sick on ventilator. On every 8th day, he opened his eyes but without involvement of the brain. Vegetative improvement. Only eyes open with baki, no sense. So, no sensation, no recognition, indicating not in full consciousness. Then slowly there was weight loss, no improvement, body becomes stiff, or like tetanus, and doctor lost hope and decided to discharge the patient, and this was told to parents of the patient.
nature of the patient. He is cute, smart, sincere, happy, most lovable in the whole family, lucky boy, most interested in study. He was completing his homework at home and after that only was to play. Behaved like a mature. He was caring to all and gives respect to all and obeying the elderly. Helps to mother in work, wants everything neat and clean, no tendency of quarrel, friendly with each other. He was fond of playing kite, cricket, and study. He was not hesitating to approach to unknown person, very locations. His good habit was of sharing of all. Overall, he was a good boy image. ये जो नेचर है पेशेंट का, this is purely soric nature, right? Yes, and the case is severe. Okay. Next. He was fearing to darkness. He was very sensitive to sun, heat, and rays, and was suffering from reddening of the skin and profuse sweating. 1 month before his fall, he was showing dissatisfaction over everything and becomes irritable. He was not able to bear heat but was comfortable in cold. He likes to eat vegetables, boiled eggs, milk, tomato, spicy food, fast food, etc. That means thermals was hot. Emerson was not particular. He was having habit of going to school immediately after eating. Going to school after immediately after the eating. He was very hyperactive child, very thirsty. Thirst was extreme when he was elevated. Birth history. During pregnancy in 3rd month, she was not able to take milk with satisfaction and was having morning sickness. Mother was having morning sickness. ये हम birth history और the mother history इसलिए देख रहे हैं कि उसमें जो टेंडेंसी आई, कौन सी? फॉलिंग, है ना? बार-बार इंजुरी, फॉल, गिरना, लगना, like this. तो उसका पॉजिटिव फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. He was not able to take milk with satisfaction and was having morning sickness. During 9 months of pregnancy, construction of her house was to be started and was to go to elder sister. Mother उसके भाई के यहाँ चली गई. There was tension regarding living in the, ये और एक member आया तो और tension बढ़ गया. There was tension regarding living in the rented house. There was severe abdominal colic and pain in the limbs. Mostly abdominal pain क्यों होता है? Anger on family members. Anger on family members cause the abdominal discomfort or abdominal pain. तो जैसे घर में ये मेंबर उससे घर में चिड़चिड़ होती थी, इसकी वजह से इसको गुस्सा आता था. Then in the pregnancy start abdominal pain. There was no argument with husband. However, there was argument with mother-in-law for some domestic matter. The argument was from both sides during pregnancy. Though there was limited work in the house, but there was no help from mother-in-law. She was having fear for the hospital. Delivery was normal. There was severe pain in the leg. After delivery, birth was normal. All milestones were normal, but child was having stammering. After delivery, birth was normal. All milestones were normal, but child was having stammering speech during childhood. Stammering speech. Again having the positive factor. बताइए. क्यों आता है stammering speech? Lack of confidence. Lack of confidence. Lack of confidence. Okay. But what is the conflict? Confidence. Okay. But what is the conflict? मत सिंपल है यार, यही तो है. मदर के साथ क्या हुआ? मत सिंपल है यार, यही तो है. मदर के साथ क्या हुआ?
सिचुएशन थी उसमें वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, गुस्सा आ रहा था सब, having stammering speech. miasmatic makeup, it is the case of mental makeup. अब ये देखो ये सब mental makeup, अब ये देखो ये सब symptoms केस में से लिए गए, conscientious, diligent, happy-go-lucky, approaching, loquacity, precocity, caring, affectionate, sympathetic, obedient, helping, hyperactive, fastidious, fear of dark, dissatisfaction, irritable, overall good boy village. Sensitive to sun heat, physical generals, hot patient, thirsty desire, vegetables, boiled egg, meat, tomatoes, spicy food, fast food, aversion, not particular, frustration, focus to immediately after feeling. Physically lengthy constitution, contraction extremities, paralysis, feeling. Physically lengthy constitution, contraction extremities, paralysis, quadriplegia, bony structure, chewing of teeth, quadriplegia, bony structure, chewing of teeth, catheterized, Ray's tube, tracheostomy, side leg. Now, show the video. First, see the boy. See how he makes the faces, the frogs, grimaces. Sound क्यों नहीं आ रहा? वीडियो का साउंड आना चाहिए. See the body structure is completely curved like a titanus, and see the bony structure, only bones. No response. See the perspiration on face in AC. Is ICU. Swing movements. These all things. Movements of jaw, movements of feet, then this grimaces. This is all due to irritation in the brain, no irritation. See the stiffness of extremities. इसमें से कुछ समझ में आया क्या हो सकता है? हेड इंजरी है, बिग हेमाटोमा है, पैरालिसिस है, नहीं. So, and according to Myasm, elements from injury, convulsions, paralysis, unconsciousness, coma but eyes open with staring of eyes, respiration difficult, stertorous, gasping, aggravate, evening, in the night and at the evening, the respiration worse and gasping like this and very speedily. So profuse discharge from lungs, profuse perspiration, involuntary stool, grimaces, making faces, chewing motion of jaw, biting of lips, tongue,
stiffness, rigidity, contraction of the extremity. This is according to Malcolm, that means syphilitic rubrics, cachexia, dribbling of saliva, basically hyperactive child, conscientious, diligent, tendency to fall injuries, desire for vegetable, sensitive to sun, heart patient, thirsty and left-sided. Next. So these are the rubric जो strong syphilitic है, convulsions, injury from, he is having convulsions since 22 days after the injury, so convulsions from injury, convulsions paralysis with, or he is having quadriplegia with convulsions, so convulsions paralysis with, then unconscious coma, eyes open with, respiration gasping, face chewing motion of jaw, perspiration profuse, stiffness, rigidity, left-sided, thirsty. Am I right? Rubric according to Hahnemann, according to जो हमने aphorism अभी तक देखे, according to aphorism है, okay? So see the repertorization. The cicuta, monthly one remedy can hear. So आपको लगता है कि सिक्यूटा इस टाइप का होता है? बताइए स्टूडेंट, सिक्यूटा के सिम्टम्स बताइए। प्रोमिनेंट सिफिलिटिक रूब्रिक बताओ, क्या है सिक्यूटा की? One prominent symptom is there, that is the history of falling injury. It covers the cicuta. So, after cicuta, single dose of cicuta, clear. First, we will see the reports. अभी फॉलोअप्स आपको केयरफुली देखना है और ऑब्जर्व करना है। पॉज करना। क्या देखा? He is responding, है ना? कमांड्स फॉलो कर रहा है। ओके, देन जो रैटलिंग था वो बढ़ गया, कफ बढ़ गया, है ना? दिस इज गुड और बैड? Modern science says it is bad. Why? Infection is growing, है ना? But we say it is right because कफ बढ़ गया, रैटलिंग बढ़ गया, this indicates we want functioning of the body. Breathing कौन सा reflex है? Coughing reflex बढ़ गया, it is always a good sign. That means the functioning, that means sora is arising here. It is the good sign. This is reversal of miasm, reversal of the disease. Yes. See the movement. The quadriplegia था ना, देखिए See, अभी और देखिएगा। See the movements in hand. See the bounce of cup. अभी देखिए वो कितने इससे हैंड को पकड़ के रखा है उसने, उंगली को पकड़ करके। That means पावर आ गई। ओके, यस।
कर्व निकल रहा था, वो सिंपल कर्व आउट पे उसे मतलब अभी सक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो बाहर आ रहा था, फिर उसे निकाला। एक्चुअली साउंड नहीं आ रहा, तो बता रहे क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो गई। वो बता रहे हैं उसे ओरली स्टार्ट किया, ओरली भी वो ले रहा है, मतलब some liquids he can take now, he can swallow now. Yes. See the movement in toes, right? So quadriplegia. Yes, stop next. See, after 1 month, I think. Single dose, no repetition. Movements of legs. Now we can easily move. We can stand also. स्पीच फंक्शन पे आना चाहिए, है ना? Yes, इसके पहले हाँ, थोड़ा बैक कर, ये गिरने के पहले उसका एक्चुअली स्कूल में गैदरिंग था, तब का फोटो है ना? और अभी आपने वीडियो में देखा उसे कैसा हो गया, तो अभी हमें फोटो में भी रिवर्सल करना है, ये ऐसे ही दिखने को होना है ना? यस, तो देखते हैं आगे। ये हो गया। Yes, this is the miracle of homeopathy. Refuse case of allopathy. मस्कुलेचर गेन हो रहा है कि नहीं? समर्थ गजानन गिरी, यस, you can talk.
Now he start going to school. Yes. वो हिस्ट्री बता रहा है कैसे गिरा था. नेक्स्ट. अभी उसे रिकरेंटली कोल्ड कोराइजा हो रहा है, इसके पेरेंट्स बताते हैं. नाउ सी द लास्ट वीडियो. दिख रहा है सेम? यस. एक मिरेकल और भी है, इसका स्टैमरिंग गया. यस. ये जेनेटिक डिसऑर्डर थी. ओके. सिस्टम. And the cicuta, see the similarity. Yes, cicuta. Its chief influence on brain and nervous system, producing violent spasmodic effect, elements from trauma, head injury, convulsions, trismus, titanus, spasms, mood, downwards with terrific violence, with a sudden shock through body or head, then rigidity and shakes, then prolonged unconsciousness. Completely covered by cicuta. See the completely totality. Opistotonous position and frightful facial distortion. आपने देखा है कि फेस कैसा कर रहा था, है ना? Facial distortions, muscle become rigid. It puts the whole nervous system in such a state of increased irritability that pressure on a part causes convulsions and is left-sided. So this is the cicuta. Next case. कुछ इंटरेस्ट आ रहा है? ओके. ओके, हमने 7th लेयर केस देखी, 3rd लेयर देखा, syphilitic देखा, psychosis देखा, again the acute emergency cases like coma ये देखा, then mental case, mental disease. तो mental disease में क्या approach होता है? Schizophrenia. How to proceed in mental illnesses? In the case of schizophrenia, it is 21 years lady video. अब ये वीडियो थोड़ा सा मराठी में है, तो मराठी में समझ में आएगी. अच्छा, लेकिन साउंड भी बहुत कम है. पॉज कर दीजिए. लक्ष्मण सर, साउंड पर कुछ हो नहीं सकता है. और इसको ना एक बॉक्स ले लेते हैं जो अपने को है, इसको जोड़ सकते हैं. क्योंकि ये सुनने में मजा आएगा. किस टाइप का सिजोफ्रेनिक पेशेंट होता है, कैसे टॉक करता है, और वो जब वो सिचुएशन में आता है
तो बस माइक लगा के नहीं हुआ। साउंड वाला एक ये वाला है ना, ठीक है ये इसमें डालना पड़ेगा। मेरा सुनो ना, ये क्या है, इससे जो है थोड़ा उसमें डालना है, 1 मिनट हो जाएगा आपको इससे ये वाला, हाँ ये वाला जोड़ने में हो जाएगा। हाँ ये इसमें डालने से हो जाएगा। इसको रखो, साउंड से इसमें काम कर देता हूँ। लीजिए उसमें आगे 1 मिनट चलो कीजिए। उसमें नहीं लगा सकते, नहीं कर रहा हूँ। आया क्या साउंड उसमें? बहुत ज्यादा बड़ा थोड़ा सा बढ़ा रहा है क्या? और बढ़ाऊं? आवाज आ रहा है लेकिन बढ़ना लीजिए मैं कराता हूँ आपको। उसमें थोड़ा साउंड बढ़ाइए ना। ये फुल है क्या? रुकिए मैं इसको और दबा देता हूँ। वो अपना आया तो साउंड चालू हो गया? ये मेरा माइक का नहीं इसका चालू कीजिए, इसको पॉज कीजिए। हाँ मैंने वीडियो पॉज है, उसको चालू कीजिए। ये साउंड आ रहा है, माइक को कम करने से मेरी बात सुनो। उसमें नहीं आ रहा इसका भी साउंड ज्यादा होगा तो इसको भी हाँ बोल। देखो हाँ अब आया। अच्छा ठीक है वही ना। माइक साइड करना है। माइक सेट नहीं है, इसको डालना है। नहीं ले रहा देखिए आपको नहीं ले रहा, इसमें नहीं लो, वो सब फुल करके देखिए। इसका कनेक्शन किस में गया? इसमें तो नहीं है, इसका इसमें डाले ही नहीं। हाँ इससे कुछ 1 मिनट ये जो है ना 1 मिनट इसका इसमें गया है, इसका प्ले करें आप 1 मिनट इसको देखिए, इसमें ना कुछ नहीं तो मैं रिसर्च इसकी सेटिंग में ओके कर दो ना। ओके नीचे कॉर्ड लगा है, स्पीकर आउट कर लो। ऐसा करें। एक मिनट ये है ना कनेक्शन किस में गया है?
उसी में ही ऑक्स में इससे हुआ क्या बढ़ना चाहिए लेकिन ये ये लगाने के बाद देखो ये जो है नहीं ये स्पीकर ऑन होना क्या चाहिए उसमें अगर आउट नहीं है स्पीकर या हेडसेट दोनों में से कोई भी ले लो ना, हेडसेट पे था उसमें नहीं आपको रहा है क्या? बहुत धीमा आ रहा है, एकदम बहुत धीमा आ रहा है। आई नहीं रहा ना, बोला इसको जोड़ देंगे तो कैसे होगा इसको ऑन है क्या? माइक ऑन है क्या? हाँ ये तो माइक ऑफ करिए। उसको बंद करो। इसका कनेक्शन जो है इसमें ये लाइन पर डालो। नहीं ऑक्स वन ऑक्स में लगा हुआ है। अरे ये ना ऑक्स दूसरा वन में डालो। हाँ डाला अब चलो ये वाले ऑक्स में प्रॉब्लम है लग रहा है। आपके पास में दिखाइए उसको। निकालिए ना, निकालिए कनेक्शन निकालिए। वो वहाँ से नहीं ये भी सुन लो मैं देख एक मिनट में देखिए। स्पीकर आउट ही होना चाहिए उसका काम है वहीं से प्रॉब्लम और आ रहा है बहुत स्लो आ रहा है स्लो आ रहा है लानी है ये भी ऐसी है ना हाँ मैं कुछ ही करूँ सर जी बिल्कुल साउंड जीरो ये फुल है आवाज आ रहा है ना? स्लो आ रहा है लो आ रहा है। इसमें चल रहा है। इसमें चल रहा है या इसमें चल रहा है। अच्छा इसके ऊपर चल रहा है। इसमें आ रहा है। ये सर उसका कनेक्शन इसमें जाना चाहिए, इसका मतलब ये होगा। हाँ वो तो बात सही है। अरे ये क्या है कि इधर तक वो चल जा रहा है, स्पीकर से स्पीकर में प्रोजेक्टर में वो स्पीकर लगाना पड़ेगा। वो स्पीकर क्या होगा ये इसका साउंड उसमें जा रहा है, वो स्पीकर इसको डिटैच करना। हाँ तो इधर से ही आएगा ना ये काम करो, ये आगे ना आगे ये प्रोजेक्टर में था हाँ उसको हटा स्पीकर में कर दिया ऑफ करना। अब आएगा Ya na, आगे yung galing sa kain. Para tuman, sige na, lagi. यस सर थोड़ा इसको भी साउंड ऑफ करो, माइक को थोड़ा बढ़ा दो, देखिए चेक कीजिए। हेलो बोलिए। हेलो हेलो और इसका भी साउंड ठीक है। बोलिए। हेलो 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 ओके ये थोड़ा बेस भी थोड़ा ठीक ड्रोन है यार, वो हेलो, आवाज हेलो। और थोड़ा बढ़ा। हेलो हेलो माइक टेस्ट हेलो थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, थोड़ा दूर कर। वो
हेलो हेलो माइक टेस्टिंग हेलो और बढ़ा दो और बढ़ा दो बोलिए सर। हेलो और ठीक है आवाज थोड़ी फट रही है ना और वो सुनाई भी नहीं दे रहा, क्लैरिटी भी नहीं आ रही, थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा मेरे को। हाँ ओके और थोड़ा इसका बेस भी थोड़ा ट्रेबल ज़्यादा कर दो, बेस कम कर दो, बेस को बिल्कुल ट्रेबल फुल कर दो, ट्रेबल फुल कर दो, आवाज़ अच्छी आ रही, क्लैरिटी आ जाएगी। हेलो आवाज़ थोड़ी हेलो 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 और बढ़ो, हेलो और बढ़ो, हेलो और बढ़ो। हेलो हेलो थोड़ा डिस्टेंस हेलो मेंटेन करने हेलो हेलो ठीक है ओके should I start? सर तो इट इज अ केस ऑफ सिजोफ्रेनिया और ये लेडी इसका पूरा टॉक जो है वो मराठी में मैं थोड़ा हिंदी में आपको कन्वर्ट करूंगा ओके इसका ब्रदर है जो पहले उसने बताया सिम्टम कि ये मतलब जब से इसको ये ऐसा हुआ है तब से कभी भी घर से निकल जाती है, कहीं पे भी चली जाएगी, कुछ भी खाएगी, कभी कभी इतना खाती है और कभी कभी फिर 8-15 दिन कुछ भी नहीं खाएगी और रात में जाना पड़ता है, कभी खेत में जाके बैठेगी, कभी कोई मंदिर में जाके बैठेगी लाइक दिस। अभी वो हिस्ट्री बता रही है कि उसे ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो उसकी शादी हुई, शादी के बाद वो जब ससुराल में गई तो उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी वो उसे बहुत तकलीफ देती थी। फिर उसके साथ साथ उसकी सास भी उसे तकलीफ देती थी और ये बता रही है कि मैंने मेरे सिस्टर इन लॉ को मेरे छोटी सिस्टर की जैसा माना, भाई मेरी छोटी सिस्टर है और उसके जैसा मैं उसे उसके साथ बिहेव करती थी, उसके साथ रहती थी, उससे प्यार करती थी, उससे दोस्ती बढ़ाया, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ देती थी। फिर हस्बैंड भी मारता था, हस्बैंड भी तकलीफ देता था, न्यूली मैरिड थी, अभी भी शादी हुई और ये कभी देखा नहीं और उसके साथ वो सब स्टार्ट हो गया। तिला मी जेवण वाढून दिलं स्वतः पण ते सांगते शेजारी की माझी वडील मी त्रास देत नाही, मी माझ्या आईपेक्षा नंतर तिला बहिणी राहणार ती पण बहिणीसारखी राहायची म्हणून 35 काही करणं माझं श्रीकृष्ण नाव करून त्यांना माझे श्रीकृष्ण धावणारा वाचवण्यासाठी। अब उसने ट्रैक छोड़ दिया, वो बताते बताते देखो उसने बताया कि मैं मेरे सिस्टर इन लॉ को खाना परोसती थी, उसको खिलाती थी, ये करती थी। फिर उसने बताया उसके हस्बैंड का नाम श्री कृष्ण, उसके हस्बैंड का नाम है। अभी उसने ट्रैक छोड़ दिया। यस हस्बैंड का नाम बताते बताते हस्बैंड का नाम श्री कृष्ण है और वो बोल रही कि मेरे यहाँ श्री कृष्ण की बहुत बड़ी मूर्ति है।
अब तुम्हारे इसमें मूर्ति है, मतलब तुम्हारी क्लिनिक में मूर्ति है क्या? तो मेरे क्लिनिक में गजानन महाराज जो आप लोग जानते होंगे, उनकी मूर्ति रखी हुई है। वो मूर्ति को देख कर इशारा कर रही है। अब वो बोल रहे हैं कि मुझे जो नाग देवता होते हैं गोपीनाथ महाराज, आप लोग शायद जानते होंगे, उनके दर्शन चाहिए। देखो ये कितने ट्रैक चेंज कर रही है बातों में। यस, बोल रही है मेरा बात करना स्टॉप हो गया, मतलब जितना बताना था बता दिया। अब वो बता रही कि उसके, मैंने पूछा कि आपके अंदर क्या है? वो बोल रहे कि मेरे अंदर क्या क्या है, सैलानी बाबा है, स्वप्नाथ महाराज है, और मैं उनमें से ही हूँ, वो देवताओं में से। मेरी माँ दुर्गा देवी और मैं कलंका देवी। बता रहे समाधान है। रामाकृष्णच नाही, कारण रामाची इच्छा पूर्ण झाली का नाही, सीतेला उसका विश्वास नहीं, क्योंकि राम की इच्छा कोई पूरी नहीं हुई, और उसके बाद विश्वास है कि रामाची इच्छा कधी पूर्ण करणार नाही, याची इच्छा पूर्ण झाली, हमारा नाम समाधान। अभी वो बोल रही कि वो खुद भगवान है और वो राम की इच्छा पूरी करने वाली है। माझे पती गोपाल वंदनीय माता, मेरे हस्बैंड गोपाल और मैं पूरी जग की माता हूँ, वंदनीय माता। तुमचं नाव सांगता मला? अब वो मुझे मेरा नाम पूछ रही है। मेरे यहाँ एक जो मैं महाराष्ट्र से फर्स्ट मेरिट आया था, तो उसकी सहदेव वानखडे, हे वानखडे माझे काका, वानखडे माझा काका आहेत ना, वानखडे काका, त्याचा मुलगा गजानन बाबाचे पूजा आहे त्याची, हे गजानन बाबा आहे। सहदेव हे माझे देव, म्हणजे महान देव, सहदेव नाही मेरे देव देव हा समाधान, हा काय हटकेश्वर, हा सहदेव आहे, हटकेश्वर हे रामचंद्र बाबा वजेगावचे, रामचंद्र महाराज वानखडे। उसका टॉपिक कैसा है, एनलाइटनिंग है ना, वन टॉपिक टू अनदर, जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। सो नो हेड एंड टेल, कहाँ से शुरुआत की, कहाँ करी, क्या क्या बताया, मैं पूरे वर्ड की मानता हूँ, मेरे अंदर इसमें सारे भगवान हैं, है ना। भगवान राम की इच्छा पूरी नहीं हुई, मैं करूंगी उसकी इच्छा पूरी, भगवान राम की इच्छा पूरी हो गई, राम मंदिर बन गया। यस, close. Yes. So she is 21 years, female. Next. This patient was brought by her brother during the camp on mental diseases at my clinic. She was under treatment of psychiatric since 1 year. She belongs to poor family and was filled with laborer. She married in a medium class family before 1.5 years, but since 1 year she was living with her father as her husband did not accept it due to her mental illness. After marriage she was very happy, but one day her sister-in-law quarreled with her, and since then she used to hate sister-in-law and was with revengeful attitude. She was in delusion that her sister-in-law is very jealous with her and do not like her. This problem was increased, and subsequently she was thinking that everybody is having jealousy with me.
her talking increased, which was baseless, without subject, without any cause, and her language was abusive, cursing with increased anger. Day by day, she became violent and was breaking the things or laughing involuntarily and sometimes weeping continuously whole day. With her brother brought her, वो पहले मुझे कैबिन में मिलने आया कि सर इसे अगर वो दौरा पड़ गया तो ये कुछ भी फेंक के मारती है, कुछ भी कर सकती है, तोड़फोड़ कर सकती है। और जब उसने ऐसा किया था अपने वीडियो में कि मेरे अंदर नाग देवता है बोले, तब थोड़ा सा लग रहा था कि अब अगर ये वायलेंट हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। She was going to temple and was sitting there for full day or going out of house and was wonderful day, no sense of appetite or sleep, hot and cold. Sometimes she was eating voraciously, however, sometimes she was not eating anything at all. Whole night she was not sleeping but was continuously talking alone. This was increased during moon phases. Yes. Past history, dermatitis in childhood, recurrent cold coryza and cough, sometimes gastric pain in abdomen, it may be due to acidity, backache and leukorrhea after marriage, family history, no any chronic disease to father, mother was having rheumatism, brother healthy. Next. Analysis. Yes. Schizophrenia, it is one-sided disease like obsessive compulsive disorder and maniac depression, as there are very few symptoms. Dr. Hahnemann said in aphorism 173, Dr. Hahnemann ने अप्रोच दिया है कि मेंटल केसेस कैसे ट्रीट करना है। सो अब ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे केसेस में क्या सिम्टम लेने चाहिए? पेशेंट जो सिम्टम्स दे रहा है, पेशेंट जो सिम्टम्स बता रहा है, पेशेंट हमने जो ऑब्जर्व किया वो लेने चाहिए। वो सिम्टम लेंगे तो इनडायरेक्टली वी आर ट्रीटिंग द डिजीज। तो क्या करना चाहिए? और पेशेंट इस कंडीशन में है कि आपको कुछ हिस्ट्री दे सके। So it is very difficult to treat the mental disease, but Hahnemann gives us a way. क्या करना चाहिए? So in aphorism 173, the only diseases that seem to have but few symptoms and on that account to be less amenable to cure are those which may be termed one-sided because they display only one or two principal symptoms which obscure almost all others. और ये जो one or two principal symptoms होते ना, this is completely based on your observation. आप क्या observe कर रहे हैं, right? So they belong chiefly to class of chronic diseases, both mental and the physical level. Next. How to go about in such cases? Aphorism 210. The state of patient's disposition is to be particularly noted along with the totality of the symptoms. State of patient's disposition. देखते क्या है? Next. In 211, the state of disposition of the patient often chiefly determines the selection of the homeopathic remedy. अगर हम disposition लेते तो 100% ऐसे केसेस हम ट्रीट कर सकते हैं। अब स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन क्या होती है देखते हैं। Disposition is the dominant quality which distinguishes a person's attitude towards life around. It is a basic reaction, tendency to act in a certain manner under given circumstances. For example, if a same situation comes, every person will react differently, and this reaction itself will distinguish each person from one another. Some can be defined, some can be mild,
this is the undiseased nature and this is called the disposition. So हमें इसकी disposition चाहिए before the disease, after the disease nature, है ना? So undiseased condition is important for us. So So Dr. Hahnemann has already said that we have to take the basic genetic nature, the undiseased nature, disposition and reactions. Okay? So mental cases में भी ये चीज find out करना is very difficult. Right? Next. तो ऐसे cases में क्या करना चाहिए? So temperamental makeup, mentally, physically and emotionally. So first. So mentally and physically we want a reaction that is quite angry. It comes from the genes, that is the genetic disposition, genetic nature, genetic reactions. But if we consider the feelings, it is emotional. So ऐसे केसेस में ऐसे नहीं कोई भी केस हो हमें इमोशंस को इंपॉर्टेंस नहीं देना है. We have to give importance to the reactions. है ना? अगर हम इमोशन कंसीडर करते कि भाई ये बहुत गुस्सा आता है या फिर बहुत शांत है, बहुत साइलेंटली बैठती है या फिर बहुत घूमते रहती है, these are all emotions. अगर हम इमोशन को लेके मेडिसिन निकालते हैं तो that remedy will be the partial minimum remedy, है ना? Because emotion से ही disease create होते हैं. Again indirectly we treat the disease, है ना? तो हमें चाहिए genetic disposition, genetic nature, genetic reaction that comes from the genes, और emotion comes from neurotransmitters, है ना? Hormones. इसीलिए हमें disease treat नहीं करना है. We don't treat the disease, so we doesn't want feelings. Feelings gives happiness, sadness like this. So these are all neurotransmitter. और अगर हमने neurotransmitter को medicine दिया कि भाई sad remedies, ignition, heteromood, CPR, है ना? ऐसे patient को ये prescribe कर दो. That means we are treating the neurotransmitters like a allopathy, है ना? Anxiolytics दे दो. भाई इस type का prescription हो जाएगा. Okay? So next. We want reactions physically and mentally. तो इसकी रिएक्शन क्या थी? जैसी उसके साथ झगड़ा हुआ, इसकी रिएक्शन क्या थी? Revenge, hatred, right? Yes. Next. So reactions come from the genes. That's why we treat with the genetic constitutional minimum, and this is the real homeopathy. Okay? So do not ask how you feel. अब इस ये genetic nature, genetic disposition reaction निकालने के लिए हमें क्या करना है? So don't ask how you feel. Always ask how you react in that situation. This gives us a genetic nature, and this gives us. अगर आपने पूछा कि आपको कैसा लगा, this will always misguide you. वो आपको न्यूरोट्रांसमीटर पे लेके जाके रख देगा, है ना? आपको always feeling देगा. आपको चाहिए reaction, genetic disposition. इसलिए always ask how you reacted in that situation. Next. If we give ignitia for grief, satisfier for anger, these will be only the neurotransmitters. Okay? Yes. Next. So consider the genetic makeup, genetic disposition, genetic reactions, and this will be the big question. है ना? ये always टेंशन में देता है कि genetic dispositions कैसे निकालना है. सबका टेंशन, सब डॉक्टर्स का टेंशन में रहता है. पेशेंट बोलते ही नहीं. पेशेंट बोलते इसकी क्या जरूरत है
है ना, हम साइको दिख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है हमारे लिए। So for genetic nature, we have or we want understanding about makeup, journey of disease, element strong and Mahasa. And this will give us a proper simillimum, that is GCL, genetic constitutional simillimum. This is the correct way to proceed in these cases. Next. So mental makeup of this case, it is having elements from quarrel, disposition, reaction like hatred, revengeful, jealousy, insanity, talk irrational, insane, violent, breaking things, laughing involuntary, weeping involuntary, wander desire, talking herself with. Physical makeup, lean thing, medium build, dark complexion, restless extremities, mental type of face, and general makeup, no sense of at all, appetite, thirst, sleep, desire, aversion, thermos, etc. So senses vanishes. No sense at all. Next. It is syphilitic case. There is fifth layer, seventh layer. Schizophrenia comes in seventh layer. Next. So, rubric for recognition. This is disposition, reaction, that is reaction is hatred, revengeful, talk insane, wander desire, senses vanishing. So these are all syphilitic groupings. After that, only one remedy, that is lachesis. ये तो हम पहले ही करते थे उतना, lachesis तो दिख ही रहा था। लेकिन साइंटिफिकली कैसे लाइकेसिस वो मैं राइट। Okay, see after 1 month. How much you get? How much? Sir, देखो, ये वो फुल है, उधर से वो इसमें करना पड़ेगा। अभी कोई थॉट नहीं आते, कोई टॉकिंग नहीं, कुछ नहीं। आई एम फीलिंग बेटर। नो ड्रीम्स। मैं पहले जैसी थी, ये डिजीज होने के पहले वैसा ही मुझे अभी फील हो रहा है। मैं अभी अच्छी हूँ, पहले जैसी बन गई। आर्टिफिशियल डिजीज मैंने पूछा कि पहले कैसी थी, और ऐसी तो कि सिर्फ इतना ही फर्क था कि शादी नहीं मिलती। Again after 1 month. Again, body. Speaker. अब देखो रूप जी यही होगा। आगे खाते हैं तो बोलते बोलते
आता असं जेवण झाल्यानंतर समजतं तेव्हा रक्ताला त्याच्याने आधीच अभी उसको थोड़े फिजिकल सिम्टम्स है अभी स्टेडी अभी मैं कुछ खाती हूँ तो मुझे जाना पड़ता है दैट मींस सेवंथ लेयर से कहाँ गए सेकंड लेयर गैस्ट्राइटिस राइट यस जेवण थोडंसं खाल्लं ना समजतं 2 3 उसके फेस भी लग रहा है आपको उसके हस्बैंड के साथ आई 1 साल बाद हस्बैंड उसको लेने को आया जिसने बोल दिया था कि मैं के ले दिया था कि मुझे नहीं चाहिए ये कि मेंटल है मुझे डिवोर्स दे दो डिवोर्स के लिए केस फाइल किया उसके बाद वो डिसमिस कर दिया और लेने आ गए यस उसको पूछा आपको कैसा लग रहा है इसको लेके तो बोले कि हम सब लोग परेशान हो गए थे आगे में मतलब उन्होंने जो प्रोसेस किया था वो बता के कर दिया कि हम कोर्ट गए डिवोर्स के लिए सोच लिया था कि अभी हमने जो होना ही नहीं लेकिन जब हम मतलब क्या बोलते कोर्ट में तारीख थी तो ये वो तारीख पे गए और इससे बात किया उसने तो उसको ऐसा लगा रहा है तो नॉर्मल हो गई फिर वो केस डिसमिस किया और फादर इन लॉ को बोला कि हम इसको लेने आते हैं आप अभिनंदन डिवोर्स कैंसल सो दिस इज मिरेकल वी सेव द लाइफ राइट यस तो बड़ा and next last good तो वो तो चलिए ससुराल लेकिन हमें क्या चाहिए हमें चाहिए रिवर्सल है ना यस सो जो माइंड में न्यूरो ट्रांसमीटर्स थे वो पूरे अब वो डाउनवर्ड होनी चाहिए 7 years to pass yes he is complaining for coraza okay तो इसके पहले इसने देखा था कि mastitis that is second layer और sinusitis is first layer last video now see the soric phase completely soric phase yes Yes, he is complaining, itching on whole body. This is 7 to first nerve to brain to nervous system to fifth layer endocrine system to first layer skin. Okay? Yes. Next please. Potency 200. Okay. Yes, generally I use 200 potency. But जहाँ vitality low है, वहाँ पे हम 1M10 यूज कर सकते हैं. But यहाँ पे vitality was strong, vitality was strong. That's why I use 200. So like this is
हार्ट अटैक का पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हमें भी ऐसा फील होता है कि अब क्या होगा, है ना? तो दिस इज अ केस ऑफ CC of congestive cardiac failure with pericardial effusion. IC emergency cases can be treated in our clinic. ऐसे केसेस के लिए हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी होता है। कोमा के केसेस, हेड इंजरी के केसेस के लिए हॉस्पिटलाइजेशन इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने हॉस्पिटल बनाया ना। विदर्भ में एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल है जहाँ मैं अंडर ऑब्जर्वेशन पेशेंट करता हूँ, मोस्टली क्रिटिकल केसेस ही मैं एडमिट करता हूँ। सो नेक्स्ट, इस केस में कंसेप्ट ऑफ हेल्थ समझना जरूरी है, क्योंकि हमारा ऑलवेज कंपैरिजन होता है एलोपैथी से, और ऐसे केसेस में तो ये ऑलवेज होता है कि भाई इतने हार्ट अटैक की केस है और होम्योपैथ के पास, तो कंसेप्ट क्या है, वो कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं और हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डिजीज, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इज सेम इन बोथ साइड्स। सो हैनेमन ने दिया है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ और राइटर ने भी दिया है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। बोथ आर कंसिडर द disturbance in functions and sensation of the body. Raiter also says it is the homeostasis. हम कहते हैं कि vital force maintain है, normal है, that means homeostasis normal है, homeostasis maintain है, then it is health, normal है, okay? Next, concept of disease. So if the homeostasis disturbed, then we can say it is a disease. So basically, Guyton, Wilden, the pathologist says disease has been described in the pathology book as an incompensated disturbance in the homeostasis. So both sciences consider the same concept, but difference is in the treatment, right? इसीलिए लोग हमारे पास आते हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं, देखिए हमारी ट्रीटमेंट अलग है, उनकी ट्रीटमेंट अलग है, ओके? लेकिन हमारे भी पास ऐसे मेडिसिन है जो इमरजेंसी वर्क करते हैं, इमरजेंसी केसेस में वर्क करते हैं, क्योंकि हमारे भी मेडिसिन का विद इन अ सेकंड एक्शन स्टार्ट हो जाता है, राइट? यस, नेक्स्ट। So this is a 50 years old lady, she was housewife. आवाज काय होणार तरी सांगा.
Sorry for interruption, but in between us, our MLA, Guru Kami, Mr. Lalit Chandra Nagar is here. I request all of you to please clap. I request Dr. Sahadeo Wankhade sir to the younger eyes. I request Dr. Sahadeo to please welcome Mr. Lalit Chandra Nagar sir. Along with some special guests also available, Mr. Umesh, Chitrangi, Linguist and social worker. I request Dr. Dilip Devangan to please welcome Mr. Umesh, Chitrangi, Linguist and social worker is between with us. Dr. Dilip Devangan. I request Dr. Radha Madam to please welcome Mrs. Dr. Nindala Gupta. Please clap for Mrs. Nindala in between us, Dr. Sunil Saul, my senior, our beloved senior, and leading practitioner. Please welcome Dr. Krishna Mansa. I request Dr. Krishna Mansa to please welcome our honorable senior, Dr. Sunil Saul, sir, leading practitioner. I request Dr. Leena Madam to please welcome Dr. Manoj Thakre, veterinary physician and social worker. Dr. Manoj Thakre. I request Dr. Anjali to please welcome Dr. Satyajit Thakur, sir. Dr. Thakur. Thank you, Dr. Anjali. I request Dr. Lakshman sir to please welcome our honorable guest speaker from Akola, Dr. Sahadeo Wankhade sir. I request Dr.
Krishna Mansa to please welcome our Honorable Principal Sir, Raipur Homeopathic Medical College, Dr. Dilip Pimple Sir. Okay, I request Dr. Krishna Mansa to please welcome Dr. Nirmal Bhoi Sir, Vice Principal, Raipur Homeopathic Medical College. He is between us from Raipur. I request Dr. Patil Sir to please welcome our Honorable President, Dr. Lakshmar, President of Sanjeevani Arogya Vahini. I request Dr. Mansa to please welcome Mrs. Neeta Chaurasia, Social Worker and BSF Counselor. Please. Thank you. Thank you, Dr. Mansa. I request our Honorable Chief Guest. And first of all, I want to hand over mic to our President, Dr. Lakshmar Sir. आज के शुभ घड़ी में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये हमारे लिए सब सौभाग्यशाली बात है। हमारे बीच में आज हमारे नवनिर्वाचित विधायक महोदय माननीय ललित चंद्राकर जी उपस्थित हुए। हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे बात को कहीं दूर तक पहुंचाने के लिए हम उनसे तो निवेदन करेंगे ही और वो हमारी बात पहुंचाएंगे, ये हमें विश्वास है। तो हमारे बीच में है तो ये अच्छा लग रहा है और मैं तो उनको बहुत करीब से अब जाने लगा हूं, तो वो सच में किसी बात को अगर बोलते हैं तो उसको करने के लिए प्रयास करते हैं और अपने उसमें करते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मैं पिछले 5 साल से एक प्रयास कर रहा था एक ऐसी बस्ती के लिए जहां पे लोग केवल शौचालय नहीं, शौचालय जो है कि पूरे भारत में आज सब जगह हो गया है, पर मगर भिलाई जैसी विकसित सिटी में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। उसके लिए मैंने बहुत प्रयास कर रहा था, पर मगर वो किसी कारण से सरकार की उदासीनता जो चल रही थी उसके कारण से नहीं हो पाया। पर जैसे ही महोदय आए, इनके आते ही उसको पास कर दिया और इस बस्ती में रोड नहीं था, एक एम्बुलेंस बरसात के दिनों में जा नहीं सकती थी, आज वहां पे भूमि पूजन कर रहे। तो ये हम लोग के लिए बात बहुत पते की है। तो हम भी इस बारे में हम अपनी बात को उनके सामने रखना चाहते हैं। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि मेरी जो बात है सबके माध्यम से मैं रिप्रेजेंट करके बताना चाह रहा हूं कि होम्योपैथी का बहुत जो विकास हुआ है, पूरे दुनिया में विकास हुआ है। 204 देश है, 204 देश में 148 देशों में होम्योपैथी चलती है। एलोपैथी के बाद में कोई सेकंड लाइन की कोई होम्योपैथी है तो वो होम्योपैथी है और इसमें कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ मिलता है। जैसे कि आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस आप देख रहे हैं, तो इसका विकास होना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, इसके लिए संसाधन होने चाहिए, सरकार की हमें मदद मिलनी चाहिए। हमारे प्रदेश में 3 कॉलेज होम्योपैथी के 3 कॉलेज है, परंतु तीनों की तीनों प्राइवेट है, पर उसमें से 2 आज की स्थिति में बंद कर दिए गए कानून के कुछ प्रावधान के कारण से। और आज ये स्थिति है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस प्रकार से पोस्ट नहीं निकल पा रही है और हमारे यहाँ पे डिस्पेंसरियां भी बहुत कम है, जिसकी तुलना में एलोपैथी की 100 गुना डिस्पेंसरियां हैं और आयुर्वेद की 10 गुना डिस्पेंसरियां हैं। 100 मेरे को बताया गया कि 122 डिस्पेंसरियां हमारे प्रदेश में है होम्योपैथी की, पर जिसमें 10 गुना समझ लीजिए, 100 गुना समझ लीजिए, बहुत हम लोग मतलब कम में है। और इस साल तो एक भी नहीं खुली, जबकि आयुर्वेद की आज 8-9 डिस्पेंसरी इस बार सैंक्शन हुई है, पर होम्योपैथी के लिए नहीं सैंक्शन। होम्योपैथी के लिए एक शासकीय कॉलेज होना चाहिए, सरकारी कॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए 2000 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो उस टाइम एक प्रयास किया गया था और भिलाई दुर्ग के क्षेत्र में एक सर्वे किया गया था, जिसमें कि जमीन को तय किया गया था और बजट भी निर्धारित हुआ था, परंतु किसी कारण से वो ठंडे बस्ते में चला गया है, वो आज तक ठंडे बस्ते में। तो मैं माननीय जी से अनुरोध करूंगा कि इस बात को
ध्यान रखते हुए हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और उनके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि इस काम को, इस पीड़ा को उठाया जाए और इसको स्थायी रूप दिया जाए, जिससे कि होम्योपैथी का विकास हो, होम्योपैथी के जन सामान्य को इसका लाभ मिल सके और डिस्पेंसरियां किसी तरह से और ज्यादा खोली जाए, जिससे कि जो होम्योपैथी ग्रेजुएट छात्र हैं उनको सर्विस मिले, सर्विस मिल करके लोगों को, गरीब से गरीब जनता को सेवा मिलना चाहिए। तो मैं ऐसा अनुरोध करता हूं कि इसके सिवा सीएमई होना चाहिए, सरकार की तरफ से संसाधन मिलने चाहिए, सीएमई होना चाहिए, जिससे कि नॉलेज बढ़े। जिस तरह के हम लोग कर रहे हैं ये हम अपने बल पे करते हैं, तो इस तरह से अगर सरकार का अनुदान मिलता रहे या किसी प्रकार की सहायता मिलती रहे तो इससे ज्यादा सीएमई होगी और लोग बहुत सारे चिकित्सक अधिक से अधिक सीख पाएंगे और सीख करके दूसरों को सेवा दे पाएंगे। तो मैं इसके साथ में अपने उद्गार को यहाँ पे स्थगित करता हूँ। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग इससे प्रसन्न रहेंगे, इस बात को निश्चित करेंगे कि इस तरह के प्रयास किए जाए वो सक्सेस की ओर जा सकते हैं। थैंक यू। I request our special guest, Mr. Chitrange sir, Umesh Chitrange sir, is industrialist to speak few words on our organization Homeopathy. Sir. आदरणीय ललित चंद्राकर जी, डॉक्टर सहदेव वानखेड़े जी जो बाहर से आए हैं, मेरे साथ में और भी बहुत सारे सीनियर लोग हैं और काफी लोगों को मैं जानता भी हूँ, मनोज ठाकरे जी, ये सब जो व्यवस्था हुई है ये अपने आप में एक अभूतपूर्व व्यवस्था हुई है जो हमको अपनी गुलामी से दूर करने वाली है। देखिए, जो जीतता है उसका ही राज चलता है। पूरे दुनिया में एलोपैथी एक प्रोग्रेसिव लाइन रही और उसने अपना बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट लगा दिया, उसके बड़े बड़े बिजनेस कॉम्प्लेक्स हैं। मैं तो सिर्फ एक व्यापार के हिसाब से बोल पाऊंगा एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट। ये इतना अच्छा आयोजन है, इस तरह के आयोजन से ला करके आप लोगों में एक विश्वास की चीजें स्थापित करते हैं। देखिए, आज अभी मैं जज साहब से चर्चा कर रहा था कि अगर मुझे कोई तकलीफ हुई, उसका एक होम्योपैथी रेमेडी हो और एक एलोपैथी हो, एक आयुर्वेदिक हो, एक यूनानी हो, तो सबसे पहले मैं एलोपैथी इसलिए उठा लेता हूँ कि यार फिर रिलीफ करेगा। पर इसका क्या रिएक्शन होगा, इसका सोसाइटी में क्या फर्क पड़ेगा और फ्यूचर में मेरे बॉडी में क्या होगा, इसका मैं कभी अंदाज नहीं करता। और ये जो हमारी जो विधाएं हैं बहुत साल पुरानी है, ये तो सब एलोपैथी, मैं एलोपैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, एलोपैथी इज ऑल्सो एडवांस साइंस, पर ये साइंस का जो इग्नोरेंस हुआ है वो इग्नोरेंस अवश्य दूर होना चाहिए। और चंद्राकर साहब से मेरा निवेदन है कि इस संजीवनी आरोग्य वाहिनी भिलाई ने जो अपना रिक्वेस्ट किया है उस पर जरूर कुछ ना कुछ आप उस पर कृपा करेंगे, सरकार को इसका सूचना देंगे। और एक बात मैं स्पेशली मेंशन करना चाहता हूं कि जब महात्मा गांधी ने देखा कि अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक जो हमारा भारतवर्ष है, इसमें बेरोजगारी आ गई क्योंकि बुनकर कपड़े मिलों के कारण बंद हो गए, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियां जो गांव-गांव में थी वो बंद हो गई, तो गरीबी आ गई पूरे कॉन्टिनेंटल, सब कॉन्टिनेंटल साउथ ईस्टर्न एशिया में। तो इतनी हमारे पास प्राकृतिक चिकित्सा है, हमारे पास यूनानी चिकित्सा है, होम्योपैथी चिकित्सा है, ये ऐसी चिकित्साएं हैं जिसमें कम नुकसान है और ज्यादा जल्दी क्विक रिलीफ है, वो जल्दी से जल्दी अडॉप्टेबल होना चाहिए। तो एक आम आदमी को, जिसका एक मीडियम फैमिली का मेन खर्चा होता है दवाइयों में और दूसरा खर्चा होता है एजुकेशन में। अब एजुकेशन के लिए तो अच्छा दोनों जगह फ्रीडम है, ऐसा नहीं सरकार की तरफ फ्रीडम है, आप कहीं भी पढ़ाइए, पर इतनी महंगी हो गई है कि आदमी का 50% बजट इन दो चीजों में चला जाता है, बच्चों के एजुकेशन में और दवाइयों में। तो इस चीज का भी एक इम्पैक्ट जो सोसाइटी में हो रहा है उसको भी जरूर ध्यान दिया जाए। मिडिल क्लास आदमी बोल नहीं पाता है पर वो तकलीफ सहता रहता है, ये भी एक बात है। और मैं डॉक्टर लक्ष्मण जी से कहूंगा कि मेरे तरफ से कोई भी किसी भी तरह का कुछ हो सकता है तो मुझे जरूर इसके लिए संपर्क करेंगे। धन्यवाद।
Thank you, sir, for the encouraging words. Hope we get delightful from that. Now I request our honorable speaker, sir, Dr. Sahadeo Wankhade, sir, to speak few words, sir. Respected विधायक सर जी और डायस पे उपस्थित हमारे गुरुजन, मैं अभी जैसे कि छत्तीसगढ़ का सत्ता पालट हुआ है और जो माहौल पूरे देश में शुरू है, ये माहौल ऐसा ही बनता रहेगा और बनता रहेगा, क्योंकि उपस्थित विधायक जी जो इसमें कुछ हमारे होम्योपैथी के लिए कर सकते हैं, जैसे कि जो प्रस्तावना यहाँ पे लक्ष्मण सर ने रखी है उसको ही मैं थोड़ा सा बता के ये रिक्वेस्ट विधायक जी से करूंगा कि सब जने बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ बहुत छोटा सा स्टेट है, लेकिन इस छोटे से स्टेट में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के अभी मुझे पता चला है कि यहाँ के 2 मेडिकल कॉलेज बंद हुए, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, और हमारे पीएम जी ने अभी संसद में ये घोषणा की है कि आने वाले 5 साल में वो एमबीबीएस कॉलेज और एमबीबीएस डॉक्टर डबल करने वाले हैं। तो थोड़ा सा होम्योपैथी के लिए भी सोचा जाए, होम्योपैथी के लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि जो खेड़ों पाड़ों में जो सेवा करते हैं, जो मेडिकल सर्विस देते हैं, वो मोस्टली होम्योपैथ होते हैं, जो होम्योपैथी भी करते हैं और एलोपैथिक प्रैक्टिस भी करते हैं। तो होम्योपैथी के लिए भी सोचा जाए, होम्योपैथी के भी कॉलेज जो बंद हुए वो फिर से शुरू हो जाए या फिर न्यू कॉलेज शुरू किए जाए, ताकि यहाँ के स्टूडेंट अदर स्टेट में जाते हैं तो उनको यहीं पे सर्विस मिले, वो यहीं पे एजुकेशन ले और होम्योपैथी की सेवा छत्तीसगढ़ में और अच्छी तरह से बढ़े। इसके लिए मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, और शायद अभी और इलेक्शन होने वाले हैं तो उसमें भी भाजपा भी आने वाला है ऐसा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मुझे लगता है हमारे यहाँ जो बात चलती है, हमारे यहाँ जो अभी माहौल है वो बीजेपी का ही है, और इतने अच्छे काम बीजेपी कर रहे हैं तो थोड़ा सा होम्योपैथी के लिए भी किया जाए और हमारे लिए भी थोड़ा सा सोचा जाए। तो यही उम्मीद से मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Sahadeo, sir. Now I request our honorable MLA, sir, to speak few words regarding our organization and this seminar. Sir. संजीवनी आरोग्य वाणी लाइन के द्वारा आज इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर सत्यजीत श्री उमेश जी लांगे जी, डॉक्टर सुनील साहू जी, डॉक्टर वानखेड़े जी, उपस्थित सभी हमारे उपस्थित यहाँ पे सभी हमारे डॉक्टर जन और हमारे संस्था के जो भी हमारे साथी भाई ठाकरे जी, चौरसिया जी, इस धरती में अगर भगवान के बाद अगर किसी को कोई पूजते हैं तो वो हमारे डॉक्टर
डॉक्टर साहब बोलने से हम लोग के मन में, उनके मन में विचार है डॉक्टर के प्रति भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, हमारे मन में वैसा एक स्वभाव, वैसा एक मन सोच